Uh, yeah, so I'll just show to everyone how to access module one. Just give me 1 second. So you can find multiple module one videos on this channel, and you can also find module one on the website. So if you go to sovereign.com/education, right, you can find both module one either on the YouTube channel or also on the website as well. So both places you can find module one. And in case you haven't done module one, it's fine. This will be slightly tough for you, but you will have to sort of do the module two after module one after module two. All right. So I think without further ado, we can start the session. So I will start with a quick summary of what we learned in module one, right? And yeah. So we'll start with a summary of module one. So let me know if you can see my screen. Yeah. So I hope you can see my screen, right? Perfect. Perfect. So I think we'll start with the summary of the last session. Those who have not done the last session, I request that you should please do module one after module two. But because you have a lot of people have not done module two, I will still give a summary of module one, right? So we start with the checklist of a good stock, right? What is a checklist of a good stock? Um, so firstly, for a good stock, right? As a investor who's um, if you are not like if you're just starting or if you are like still in the learning process, this is like the best checklist. Um, the valuations of the stock should be decent. We should preferably buy stocks at around 30p or less than 30p. That is preferable. The most important thing in a stock is profit uptrend, right? The job of a company is to constantly increase profits, and a company which is increasing profits is a typically a good company, right? So profit uptrend is the most important characteristic of a good stock. We must buy stocks which have profit uptrends. Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा, profit घटेगा तो price घटेगा. So profit uptrend is very important. Thirdly, future information. We must have future information about our companies. There are different kinds of future information. What is the job of future information? Future information help you predict the future. Okay. So a company which is raising funding through preferential allotment, that is future information. A company which is undergoing capacity expansion, that is future information. A company which is posting excellent results, that gives you some kind of future information, but not a lot. Companies doing acquisitions, companies doing takeovers, companies getting large orders, right? So large orders, preferential capacity expansion, a new plant, new product, CWIP, all these are forms of future information, right? Fourthly, we must know what other HNIs are doing in the market. HNIs are smart investors who have access to good information. A lot of them do a lot of research before buying any stock. And therefore, we must understand what other HNIs are doing in the market because that's very important as well. And lastly, we preferably should invest in emerging sectors. So sectors which are expected to grow at a very high CAGR for the next 10 years, I think those are the sectors that one should be investing in. And examples of such sectors are electric vehicle, defense, semiconductor, railways, consumption, new age IT, infra, sustainability, green energy, etc. Right? So this is a summary of the last session, and I will still quickly walk everyone through each point of the last session. Right? So this in one line is the summary of anyone's investing. You must buy stocks which have profit uptrend. The job of a company is to constantly increase profits.
Making profits is not sufficient. The job of a company is to constantly increase profits, and a company increasing profits is typically a good company. Okay, let me show you one example. Right? Let's like make this real with examples. Let's take this company. All right, let's look at the numbers for this company. This company has increased profits for the last 4 years very consecutively. Every year they are increasing profits. 1, 8, 15, 25, 27. Right? Net profit, and even if you look at operating profit, both are increasing. 1, 11, 20, 33, 36. Right? Is this a good business or a bad business? 1, 8, 15, 25, 27. Is it a good business or a bad business? Can you write in the chat window if you think this is a good business or a bad business? Right? This company is constantly increasing profits. The job of a company is to constantly increase profits, and it is doing its job fantastically well. And what's the result? What's the result of this? We can have a look at the result of all this. By you can see what happened to the stock price from 30 rupees to 1200 rupees. Someone is asking how much percentage should the profits increase? The faster the better. I prefer at least 30% increase every year. 30% तो मिल ही जाता है, बहुत कंपनियां कर रही हैं. So I think you will be able to find companies which are increasing profits by 20 to 30% every year. 20 to 30% is a good number. More than that is of course a very good number, but 20 to 30% is also a good number. Right? So I hope this example is clear. Let's look at another example. Is this a good business or a bad business? Last 3 years of this company, they have constantly increased profits. Is it a good business or a bad business? Is this a good business or a bad business? Again, it was not a very good business some time back. If you look at the numbers for this company, right? Before 2020, it was a very average business. In fact, it became bad actually. Post 2020, the business has become very, very strong, right? Constantly increasing profits, right? So, does everyone agree that this is a strong business? Minus 29, 112, 139, constantly increasing profits. FII doesn't matter. FII, DI doesn't matter. Profit बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. Profit घटेगा तो प्राइस घटेगा. FII है नहीं है फर्क नहीं पड़ता. It is all about profits. Investing is all about profits. Profit बढ़ेगा तो प्राइस में बढ़ना ही बढ़ना है. ठीक है. What about cash flow? See, अगर आपको लगता है कि वो बंदा चोर है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में घुस सकते हैं. 95% लोग चोर नहीं है इंडियन मार्केट में. 95% जेन्युइन है. ज्यादा कैश फ्लो में तब गुस्सा होता है कि जब कोई पूरी दुनिया बोल रही है कि अरे बंदा चोर है. एंड ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे बंदा चोर है. कुछ कंपनीज के बारे में तो ऑलमोस्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन होता है कि यार ये चोरी कर रही है. तो उस केस में आप कैश फ्लो में घुस सकते हैं. अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड, जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम कैश फ्लो. फर्क ही नहीं पड़ता है. प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा. एंड जस्ट टू प्रूव इट टू यू, क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है पिछले कुछ समय में? प्रॉफिट बहुत ही क्लियरली बढ़ रहा है. आप देख सकते हैं प्रॉफिट काफी बड़ा है और 70 रुपए से 700 रुपए हो गया. राइट? सो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्लियरली प्रॉफिट इस कंपनी में भी बढ़ रहा है. ठीक है. एक और कंपनी का एग्जांपल लेते हैं. ये बताइएगा अच्छा बिजनेस है कि नहीं है. अच्छा बिजनेस है कि बुरा बिजनेस है? सॉरी, अच्छा बिजनेस है बुरा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 6, 22, 43, 110, 121. अच्छा है बुरा है? बढ़ रहा है. राइट? वेरी स्ट्रांगली इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स बढ़ रहा है. प्रॉफिट बढ़ना अच्छी बात होती है. प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. कैन वी सी इसका प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं? लेट्स सी अगर प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं. प्राइस भी बहुत ही क्लियरली बढ़ रहा है. राइट? प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. राइट? ये बताइएगा कैसा बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बिजनेस जो है. 2, 3, 11, 27. प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 2, 3, 11, 27. क्लियर इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. 10 साल से प्रॉफिट, पिछले 3 साल में प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ाया है. क्लियरली प्रॉफिट बढ़ रहा है. प्राइस को देख लेते हैं. अगर हम लंबा प्राइस देखेंगे तो 3 साल में प्राइस देखिए, 100 रुपए से काफी एकदम ही भाग के काफी ऊपर चला गया था. मतलब 100 रुपए से भाग के सीधा ही 2000 रुपए पहुंच गया था. तो प्रॉफिट बढ़ता है तो प्राइस में बढ़ना ही होता है. आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट ए गिवन. ठीक है.
एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ये बताइए कैसा बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग है, बेकार है, कैसा लग रहा है आपको? स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, एवरेज है? ये बीच में काफी एवरेज था, अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन किया इसने, अभी ये बढ़ना चालू हुआ है। ठीक है, तो बीच में पहले यहां से यहां तक ये काफी एवरेज बिजनेस है, उसके अभी ये थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है। एंड सेम चीज इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको दिख जाएगी। तो अगर हम देखेंगे, इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे, तो देखिए पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है, कुछ कुछ समय से बढ़ा हुआ है। 10 साल में देखिए, क्योंकि 10 साल में प्रॉफिट नहीं बढ़ा है तो ऑब्वियसली प्राइस भी नहीं बढ़ा है। 10 साल पहले जो प्राइस था, क्योंकि आज भी उसके बराबर का ही मोटा मोटा प्रॉफिट है, इसलिए इतना नहीं बढ़ा है, बट पिछले 2-3 सालों में ठीक ठाक इसका प्राइस भी अप्रिशिएट किया है। तो वही है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस में बढ़ना है, बट अगेन एवरेज बिजनेस है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो 10 साल से कोई खास ग्रोथ कराया नहीं है। 10 साल पहले जो भी नंबर थे, वो भी आज भी वही नंबर, राइट? तो नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस। समवन इज सेइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बट नेट प्रॉफिट नॉट इंक्रीज। दोनों बढ़ने चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, आइडली दोनों बढ़ने चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, बोथ शुड बी इंक्रीजिंग। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। और लास्ट एग्जांपल किसका लें? इस कंपनी का ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, वीक बिजनेस है? 5, 31, 31, 114। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, वीक बिजनेस? प्रॉफिट बढ़ रहा है? यस, प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा। वी गो टू द प्राइस चार्ट। हाउ टू नो इफ इट इज फैक्टर्ड इन? ये फैक्टर्ड इन तो टर्म या भूल जाइए, फैक्टर्ड इन कुछ नहीं होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में तो वैसे भी सर्किट्स होते हैं, तो कुछ फैक्टरिंग इन करना नामुमकिन है। वैल्यूएशन को समझेंगे, वैल्यूएशन वी विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ टुडे। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा। ठीक है, I think, can everyone write this down in the chat window? I want profit uptrend because this is the most important line in investing. Profit should increase. अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट अ, इट मे बी अ प्रॉब्लम, राइट? आई वांट प्रॉफिट अपट्रेंड, 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 right? Profit uptrend is very important, and your company's profits must increase. Only then it is a good company. Okay, profit uptrend is very 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 important. I can give you one more example. um, let me know if this is a good company or bad company. Is this company a good company or a bad company? It's a loss making company. Loss making companies are bad companies. We should stay away from loss making companies. The job of a for profit enterprise is to make profits and increase profits. If the company is making losses, it's a horribly bad company. Does everyone agree that this is a bad company? Yes or no? I hope everyone agrees that this is a bad company. It is not sheer logic. It is not a good company. All right. Um, Zomato as an example. See, I will not comment on new age businesses, but conventional logic, never buy a loss making company. Loss making companies are not good companies. अगर आप मुझे बोलें कि यार सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी ही बची है और कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, तो मैं फिर भी पिक एंड चूज कर लूंगा। बट कन्वेंशनल लॉजिक डिक्टेट्स दैट जब मेरे पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, तो मैं क्यों लॉस मेकिंग में हाथ डालूं? क्यों मुझे लॉस मेकिंग में टच करना? ग्लोरी तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो पैसा बनाना है। पैसा प्रॉफिट में बनता है, तो वाई टू पुट योर हैंड इन अ लॉस मेकिंग कंपनी, राइट? ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम लॉस मेकिंग कंपनीज, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ऑलवेज 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 स्टे अवे फ्रॉम लॉस मेकिंग कंपनीज। इन्वेस्टिंग इन लॉस मेकिंग कंपनी, शेयर लॉजिक, लॉस मेकिंग बिजनेस इज अ बैड बिजनेस। यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन लॉस मेकिंग बिजनेस, राइट? टर्न अराउंड स्टोरीज, टर्न अराउंड इज ऑफ कोर्स अ डिफरेंट थिंग, वी विल स्टडी टर्न अराउंड। टर्न अराउंड में तो प्रॉफिट में आ जाती है, तो प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना उस केस में। इन टर्न अराउंड स्टोरीज तो ऑब्वियसली आर गुड कंपनीज, उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड थिंग, this again is very important. I will stay away from loss making companies. We must stay away from loss making companies, right? Second point, we must buy at good valuation. I will buy at low PE. Typically, less than 30 or less than 40 is a good price to earnings ratio. Preferably, buy at a low price to earnings ratio. Don't buy at high price to earnings ratio, right?
There are so many companies which are available at good price to earnings ratio. Preferably buy less than 50p ratio, 30p ratio, preferably less than 30. आजकल थोड़ा बुल मार्केट है तो आपको 30 के आसपास 35 में भी कंपनी अच्छी कंपनियां मिल रही हैं. Preferably less than 30, but less than 50 is also perfectly fine. Right? I will buy at low PE. I think that's very, very, very important as well. Preferably buy less than 30p ratio because you will find a lot of companies which are available at low PE ratios, right? We should not be buying at high P ratios. It doesn't make sense. High P means that market expects very high growth from the company in the future. High P means that the market expects a very high growth from the company in the future. If the company delivers, well and good, no problem. If the company fails to deliver, market will penalize it. Low P means that market को companies को expectation नहीं है. अगर company बढ़ गई तो market चढ़ाएगी. Company नहीं भी बढ़ी तो कोई expectation तो वैसी नहीं थी. So high P has a strong downside risk. Low P has far lesser downside risk. Right? I don't mean to say that high P businesses are bad businesses. High P में भी अच्छे होते हैं. But high P businesses, if they don't perform, they will be penalized very, very badly. Right? So this is clear as well. If a company is having strong growth and P is high, it is a fine case, but you should be 100% sure that the growth is here to stay. What is meant by forward P? Forward P, we'll मतलब उसकी जरूरत नहीं है, but we'll understand थोड़ा what is forward P in the lecture today. इतना जरूरत नहीं होता उसका forward P. Anyway, so I hope this is clear that we must buy at low price to earnings ratio. This is very important. We must have future information about the company. See, investing is all about future, right? Someone is saying that, can you elaborate how do the companies get penalty for high P ratio? A company has a high P ratio. What it means is that market is expecting high growth from the company. But let's say the growth does not come. तो क्या होगा? मार्केट बोलेगी यार ग्रोथ तो आई नहीं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हाई ग्रोथ, तो मार्केट प्राइस गिरा देगी. क्या हमने आपको हाई पी रेशियो दिया था ये सोच के कि आप ग्रो करने वाले हैं, बट ग्रोथ तो आई नहीं, इससे आपका प्राइस गिरा देंगे. तो हाई पी रेशियो में ग्रोथ नहीं आती है तो प्राइस बहुत ड्रामेटिकली गिर जाता है. दैट इज द प्रॉब्लम विद हाई पी रेशियो कंपनीज कि एकदम से मार्केट उसके पी को गिराने का कोशिश करेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ऐसे पनिशमेंट्स काफी बारी मिल जाते हैं. जैसे ड्रीम फोक्स था, वो 50 के पी पे था. 50 इज नॉट दैट बैडली हाई, बट हल्का सा खराब रिजल्ट आया और स्टॉक प्राइस को एकदम ही खत्म कर दिया गया. मतलब सीधा 800 रुपए से 500 रुपए पहुंचा दिया गया बिकॉज दे पोस्टेड अ बैड रिजल्ट. इज दिस अ बैड रिजल्ट और गुड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यू? Profits have halved. Is this a bad result or a good result for this company? This is a bad result, right? Profit was increasing, it suddenly became half. Bad result, in fact, a very bad result. It was a slightly high P ratio company. Market did not take it lightly. It was like really badly penalized, right? So market penalizes high P ratio companies if they post bad numbers, and the punishment is very, very severe. If the P ratios are high, higher the P ratio, higher the punishment. Lower the P ratio, lower the punishment. Okay, by price reduction. So I hope this is clear. Future information is the most important thing in investing. See, पुराना डेटा देख के past के बारे में पता चलता है. Future information tells you about the future. We must have future information about the company. That is very, 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 very important. All right. So let me show you what future information means, right? Yeah. So if I look at the Discovery platform, right? Let's take this company called, and by the way, do you like the new look of Sovereign? So we had a Independence Day kind of a look for Sovereign. Do you like the new look? Like we decorated the website so that it looks nice, and we sort of celebrate Independence Day as well, right? So sort of give it a new look. So thank you so much. Anyway, so let me show you what is the future information. If I look at Discovery, right, you will see a lot of future information. Have you been using Discovery? Have you been using Discovery platform? Yes or no? You should try to use it because this is the most important. This is like a really, really important platform. You must be using it. It is like supremely helpful,
right? For me, I use it a lot. In fact, for my own research, I use Discovery Platform a lot for my personal research as well, right? So let us look at capacity expansions, large order receipts. So this company, ITD Cementation, it got a 1700 crore order. Is it a good thing or a bad thing? ITD Cementation got a 1700 crore order. Good thing or a bad thing? It's a very good thing, right? It's a good thing, of course. It's a big order for the company. If I click on the company, I can see all the orders which the company got. So 1700 crore orders they got. They secured 833 crore order as well. So in the last 7 months, they have got almost 2500 crore of orders. 2500 crore के order मिले इनको. And these are like pretty big orders, right? 2500 crore is a big number of orders which the company has got in the last 7 months, right? So large order is an example of future information because it helps us predict the future, right? RBM Infracon, again, this company has got 40 crores of order. Is this a good thing or a bad thing that this company got a 40 crore order? Someone is saying how to know will they execute or not. One question for everyone. Why would a company get an order? Would the order giver check the execution capability? Because order giver 1700 crore का order दे रहा है. Do you think order giver ने कुछ diligence किया होगा? या उसने ऐसे ही दे दिया होगा कि यार 1700 crore का चलो दे देते हैं? Do you think the order giver would have done a diligence before committing 1700 crores of orders to the order executor? Do you think they would have done a diligence? Yes or no? Yes, they typically do diligence. Otherwise, 1700 crore रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं, राइट? 1700 crore का ऑर्डर देना मतलब थोड़ा ट्रस्ट तो होगा, नहीं तो नहीं देंगे. मतलब 1700 crore is a big number, right? मतलब it's a pretty huge number actually. Like pretty big number, right? So I think typically order, if a company is getting orders, it's like pretty a good deal. Someone is saying how big is 40 crores as compared to the annual revenue. Annual revenue is somewhere around 80 crores. So is 40 crores significant? If annual revenue is 80 crores, is 40 crores significant? Yes or no? If annual revenue is 80 crore, 40 crore is significant. आधा आधा order तो एक मतलब आधा revenue तो एक order से मिल गया है, right? So it's a pretty significant order because the revenue is very significant, right? So this is future information. We must have future information about the future. Like order book, I can show more types of information as well. Capacity expansions are also a kind of future information. Let me show you capacity expansion. So if you check capacity expansion, Som Distillery, the company has placed orders for expansion of the beer facility at its Hassan plant. Orders have been placed out of Germany and India. Expansion will add 60 lakh cases from the Hassan plant, and the beer volumes from the Hassan plant was 65 lakh cases. So it's a pretty huge order. 65 lakh cases का capacity था, sales volume था, and 60 lakh per annum का add हो रहा है basically, right? So it's a pretty significant go. Mrs. Bector, the company, um, the company has added 2 new biscuit lines at Rajpura, and so on and so forth, right? Again, priced in, nothing is, if you're buying if you're buying a company at a good valuation, it is not priced in. Never buy a company at a very high valuation. And we will learn more about valuations today. आज काफी हम और बहुत कुछ सीखेंगे. So please bear with me. You will exactly learn कि भाई कैसे math करनी है. In fact, we will learn how to actually predict the future price of a stock today. So after 1 year, उसका math कैसे होता है? So don't worry, we will answer all these questions. Right. So I think I hope this is clear that future information is very important, right? So I hope that's clear. So I think I want future information. Can we write this down in the chat window? Can we write this down in the chat window? I want future information. I want future information. I want future information. I want future information. I love future information because it's very important. We must have future information to predict the future because
Otherwise, we will not be able to predict future properly, right? So future information is very, 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 very important, right? So I hope this is understood that future information is important. Fourthly, I will make HNIs work for me. We have to leverage what HNIs are doing in the market. Today, we will predict the price of a stock. So anyone who's saying factored in or prediction or whatever, wait for some time. You will predict the price of a stock only. आप एक साल बाद प्राइस ही बता दोगे कि अच्छा इतना प्राइस होने वाला है. तो फिर तो फैक्टर इन ये सब के डाउट्स ही हट जाते हैं क्योंकि बहुत ही इजी मैथ से सीख लेंगे प्राइस प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 1 ईयर. थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ कोर्स. ठीक है, प्रैक्टिकल प्राइस थ्योरेटिकल प्राइस. थ्योरेटिकल मैथ कैसे किया जाता है. So I will make HNIs work for me. I think this is very important. We must know what other HNIs are doing in the market. And let's check how do we find HNI buying behavior as well. So let's check how to find HNI buying behavior. If I look at this one, curated bulk deals. So you can see what HNIs are buying in the market, right? 118 companies are there in the bucket. MAS Financial, Basant Maheshwari Wealth Advisor purchased this company, 0.5% of this company. Vartos Advertising, Ebin Global Opportunity Fund purchased 1 lakh shares of this company. Alpha Transformer, Anand Prakash Shah purchased 37 lakh of this company. Aha Solar, Saurabh Tripathi purchased 73,000 shares of this company. Gina Seco, Society Generale bought this company. Olectra Green Tech, the buyer name was not disclosed, but some big buyer bought this company, right? So clearly, you can see the buying interest in the stocks, right? MAS Financial clearly has some buying interest. Mishchan Foods has some buying interest. Vartos has some buying interest. Alpha has some buying interest. Olectra has some buying interest. Gensol has some buying interest, and so on and so forth, right? So you can clearly see what HNIs are doing in the market, right? And we must take advantage of their buy orders as well. Okay, are HNIs, most HNIs long-term investors or most HNIs traders? क्या HNIs trading करते हैं? Can you trade around with 1-2% of companies? कि 1-2% कंपनी खरीद ली फिर बेच दी? Can you trade around with 1-2% companies? No, right? It's not that easy. HNIs are typically long-term investors. They would want to hold for a fairly long period of time, right? So they typically hold for a long period of time. And you can also check HNI. We have a curated list as well for HNIs. If I look at star investors, you can find some people here also. What is Gunwant Vaidji having? Selva Murthy Akilendeshwari having? Ashish Kacholia, Maven India Fund, Sandeep Kapadia. So we do have some star investor buckets here as well, which you can check. So if I look at Gunaji's portfolio, Spectrum Electrical, Kotiar, Indrani Biotech, Inflame, RMC, Sealmatic, Gargi, Srivasavi, Arham, Jai Jalaram. So all these are sort of there in Gunaji's portfolio, right? Please add Aditya Joshi as well. I say that it is my platform. I don't want to add my name. You can find my name on Trendline. Apne platform mein apna naam tha, I'll not add. It will seem kind of funny. Yeah, I think this is important data as well. And we must check HNI behavior as well, right? Again, I think summary, profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. So I think that's like the summary of the thing as well, right? So I hope this summary is clear, right? All those who are attending the basic session for the first time, all those who have not done the basic session actually, is it clear so far? All those who have not done the basic session so far, is it clear so far? It might be complicated, but I think do attend the basic session. I think that will be really helpful. And the basic session recording is there on the website, so you can sort of attend the basic session on the website as well. Okay. Let us move to the more complicated stuff. Okay. So let me move to the more complicated stuff. Firstly, how to calculate P correctly, right? So let us calculate the P's of certain companies. Okay, so P करना calculate चालू कर देते हैं, right? So how do you calculate P of a company? Let me just show it to everyone.
राइट? सो पीई इज सिंपली मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टीटीएम पैट. ओके, सो केपीआई ग्रीन का कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट अस कैलकुलेट द पी रेशियो फॉर केपीआई ग्रीन एनर्जी. Right. So what's the market cap for KPI Green? 3,000 crore. Can you see 3,000 crore? Yes or no? 3,000 दिख रहा है सबको? So 3,000 crore is the market cap. And what's the TTM PAT? TTM PAT is your 121 crore. What is TTM? TTM is पिछले 12 महीने, last 12 months. पिछले 12 महीने में कितना पैट था? What is PAT? PAT is profit after tax. ठीक है, इस कंपनी ने 121 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था पिछले 12 महीनों में. ठीक है, तो 121 करोड़ का प्रॉफिट है और 3,000 करोड़ की मार्केट कैप है. तो डेटा डाल देते हैं. 3,000 करोड़ मोटा मोटा, 121 करोड़ का पैट, पी कितना आ गया? दिस अपॉन दिस, 25 के आसपास आ गया. तो ये सिंपल मैथ क्लियर है कि पी कितना आया है? 25 के करीब का. इज दिस वेरी क्लियर कि 25 का पी आ गया है? आई होप दिस इज फेयरली क्लियर. मार्केट कैप अपॉन पैट इज पीई एंड पीई इनटू पैट इज मार्केट कैप. ठीक है, तो ये बस बेसिक फॉर्मूला याद रखना है. ये बेसिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टीटीएम पैट इज पी. राइट. केपीआई ग्रीन लिमिटेड एंड केपी ग्रीन, केपी एनर्जी अलग है, केपीआई ग्रीन अलग है. केपीआई ग्रीन एंड केपी ग्रीन कुछ नहीं, केपी एनर्जी अलग है, केपीआई ग्रीन अलग. ठीक है, एक और कंपनी का कर लेते हैं. इस कंपनी का कितना मार्केट कैप है? आरएमसी स्विचगेयर, 425 करोड़ रुपए का. राइट, 425 करोड़ का मार्केट कैप है. और अगर हम इसका वो देखें, पैट देखें, टीटीएम पैट, तो कितना है? 12 करोड़ का. राइट, 12 करोड़ दिख गया सबको? 12 करोड़ का प्रॉफिट है. एंड पैट प्रॉफिट एक ही बात होती है, 12 करोड़ का प्रॉफिट है और 425 करोड़ की मार्केट कैप है. ठीक है, तो नंबर डाल देते हैं, कितना आया वो? 425 और ये आया था 12, तो आपका हो गया दिस अपॉन दिस. राइट, 35.4 का पी आ गया. चेक कर लेते हैं. 35 का मोटा मोटी वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पता नहीं इनका 36 क्यों है, बट मोटा मोटी वही 35 का ही आपका पी रेशियो. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज हाउ यू कैलकुलेट पी रेशियोज, विच इज मार्केट कैप डिवाइडेड बाय योर पैट. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. राइट, नाउ ये कैसे बताएं कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है? अच्छा, थोड़ा वैल्यूएशन समझ लेते हैं. ठीक है, अगर आपको आलू खरीदने हैं, ठीक है, आप पोटेटोस खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, एंड द वेजिटेबल सेलर गिव्स यू पोटेटोस फॉर 1 रुपी पर केजी. सस्ता है, फेयरली वैल्यूड है, महंगा है. आलू है 20 रुपीज पर केजी, सस्ता है, फेयरली वैल्यूड है, महंगा है. 1 रुपए पर केजी, 1 रुपी पर केजी. सस्ता है, राइट. तो 1 रुपए पे आलू जो हम खरीद रहे हैं वो सस्ता है. ठीक है, अभी मैं ब्लिंकिट खोल रहा हूँ. ब्लिंकिट में जो, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सॉर्ट ऑफ फाइंड द करंट प्राइस ऑफ पोटैटो. या, तो ऑर्गेनिकली ग्रोन पोटेटोज है वो 50 रुपए किलो के मिल रहे हैं. 50 रुपए किलो में सस्ता है, फेयरली वैल्यूड है, महंगा है. ऑर्गेनिकली ग्रोन पोटेटोज 50 रुपए किलो, सस्ता है, फेयरली वैल्यूड है, महंगा है. फेयरली वैल्यूड है. यू आर राइट, यू आर राइट. साइटी कॉस्टली बोल लो, हल्का सा फेयरली वैल्यूड के आसपास बोल लो. नॉर्मल पोटेटो 30 रुपए किलो के इस टाइम पे ब्लिंकिट खोल कर रखा हुआ है मैंने, तो 30 रुपए किलो पे फेयरली वैल्यूड है. ठीक है, अब आलू एट 10,000 रुपए पर किलो, 10,000 रुपीज पर केजी, सस्ता है, महंगा है, फेयरली वैल्यूड है. सस्ता है, महंगा है, फेयरली वैल्यूड है. आलू जो है ओवर वैल्यूड है, राइट. तो क्लियरली हमें पता है कि आलू 1 रुपए में सस्ता है, 30 रुपए में फेयरली वैल्यूड है, और 10,000 रुपए में महंगा है. सेम चीज हमें कंपनी के लिए करनी है कि कंपनी सस्ती है, महंगी है, कि फेयरली वैल्यूड है. ठीक है, अब आलू में तो हमें पता है कि यार एक आलू 1 रुपए के कहाँ आते हैं, तो हमें पता है कि भाई आलू 1 रुपए के सस्ते हैं और 10,000 के महंगे हैं. कंपनी में कैसे बताएगी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कि सही प्राइस पे? उसके लिए एक तरीका होता है पी रेशियो. ठीक है, पी रेशियो से हमें चेक करना पड़ता है कि कंपनी सस्ती है, महंगी है, फेयरली वैल्यूड है. ठीक है,
अभी देखते हैं कि पी रेशियोज क्या क्या होते हैं। ठीक है। अम, तो अगर आप देखेंगे, आईटी सर्विस कंपनी जो है, प्राइस टू बुक बुक वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, पी रेशियो में सब हो जाता है, बुक वैल्यू का कोई जरूरत नहीं। जितना सिंपल करेंगे उतना बढ़िया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स ही सीखने, एकदम सिंपल करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स विल नॉट डू अ लॉट ऑफ complexity, right? So if I look at the P ratios, right, this is the sectoral P ratios of companies. IT services में 30 to 50, फार्मा में 20 to 30, commodity trading में 5 to 15, कंज्यूमर रिटेल में 30 to 100, कैपिटल गुड्स में 30 to 60, नॉन इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स 30 to 60, इंफ्रा 8 to 20, रियल्टी 30 to 40, बैंकिंग 10 to 20, पावर जनरेशन 20 to 30, electric vehicle 30 to 90, and so on and so forth, right? So this is like the P ratio table. You can compare your company's P ratio with this table and say whether it is fairly valued, overvalued, undervalued. All right. So let us look at let us look at um, uh, which okay. Let us look at this company, KPI Green Energy. Okay, I think two more things. Okay, first, so now there are two ways of valuation assessment. Okay, ये बताना कि सस्ता है महंगा है कि फेयरली वैल्यूड है, इसके दो तरीके हैं. वन इज टाइम कंपैरिजन, वन इज सेक्टर कंपैरिजन. इन स्मॉल कैप्स वी विल डू सेक्टर कंपैरिजन. इन लार्ज कैप्स वी विल डू टाइम कंपैरिजन, एंड विल टीच व्हाट टाइम कंपैरिजन एंड सेक्टर कंपैरिजन आर. ठीक है. while comparing we should consider average of the range. अभी देख लेते हैं, अभी देखते हैं प्रशांत जी. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. ठीक है. तो लार्ज कैप में टाइम कंपैरिजन करना है और स्मॉल कैप से सेक्टर कंपैरिजन करना है. ठीक है. अब लार्ज कैप में देख लेते हैं टाइम कंपैरिजन कैसे करना है. ठीक है. रिलायंस का नंबर देख लेते हैं. रिलायंस जो है उसका पी रेशियो देख लेते हैं हिस्टोरिकल. ठीक है. अगर पिछले 5 साल का पी रेशियो देखें तो रफली, अगर आप एवरेज देखें तो 24 के आसपास रही है. ठीक है, ये 24 के आसपास रही है. तो किस टाइम पे कैन वी क्लियरली से कि ऑन 11 September 2020 Reliance was overvalued? Can we clearly say that on 11 September 2020 Reliance was overvalued? Can we clearly say that? Because इसका जो लॉन्ग रन पी रेशियो है 5 साल का, वो 24 के आसपास है. तो ऑन 11 September 2020 it is very clear that Reliance was supremely overvalued, right? तो ऑलमोस्ट बहुत ही क्लियर है कि भाई रिलायंस ओवरवैल्यूड था, इस दिन भी खरीदना चाहिए था. When was Reliance a good buy? Reliance was good buy somewhere around यहाँ पे 31 मार्च के आस. Y24, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है ना, इससे एवरेज दे रखा है. इफ यू सी दिस डॉटेड लाइन, राइट, दिस इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर पी रेशियो. तो लास्ट 5 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 25 से हल्का सा कम है. मतलब इफ आई लुक एट दिस चार्ट, राइट, दिस राइट हैंड साइड, राइट, 11 September 2020 पोस्ट कोविड रेंज, यस इट वाज ओवरवैल्यूड ड्यूरिंग कोविड. कोविड में सब कुछ ओवरवैल्यू हो गया था. ठीक है. So clearly it was overvalued at this point of time. It was undervalued somewhere around here. On 17th March 2023, it was the highest levels of undervaluation which the company saw. उसके बाद से इस कंपनी में रैली आना चालू हो गया कि भाई ये काफी गिर गया इसका पी रेशियो, लेट अस लाइक इंक्रीज द पी रेशियो स्लाइड बिट, राइट. सो इट वाज फेयरली ओवरवैल्यूड हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सी समवेयर अराउंड September 22 वो अपने फेयर वैल्यू पे घूम रहा था. उसके बाद थोड़ा और गिरता गया. उसके बाद जब वो बहुत गिर गया तो मार्केट ने इसके पी रेशियो को बढ़ाना चालू कर दिया. ठीक है. तो इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए था. अब फेयर वैल्यूएशन पे आप खरीद सकते हो किसी भी कंपनी को. ये पॉइंट्स ठीक थे. मतलब अगर कोई जुलाई में खरीदता लास्ट ईयर, या इस पॉइंट के आसपास लेता, इस पॉइंट पे लेता, आइडियली तो 17 मार्च अच्छा टाइम था, तो ये काफी फेयरली वैल्यू था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो ऑलवेज बाय ईदर एट फेयर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, प्रेफरेबली. मतलब अंडर वैल्यूएशन पे ले या फेयर वैल्यूएशन पे ले. अंडर वैल्यूएशन ज्यादा अच्छा टाइम होता है, फेयर वैल्यूएशन भी चलता है, बट अंडर वैल्यूएशन इज द बेस्ट टाइम. ठीक है. एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन कि वो इसका प्राइस भी बढ़ना चालू हो गया पिछले कुछ समय में. काफी बढ़ गया है प्राइस, क्योंकि ये काफी अंडर वैल्यू था बेसिकली. इससे इसका प्राइस थोड़ा बढ़ना चालू हो गया पिछले कुछ समय. तो ये इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग गया है बेसिकली. ठीक है. आईटीसी में देख लेते हैं. सेम सेम थिंग. लेट अस लुक एट आईटीसी.
तो आईटीसी कब अंडर वैल्यूड था? आईटीसी कब अंडर वैल्यूड था? आईटीसी इस टाइम पे ओवर वैल्यूड था, आपका 12 अप्रैल के आसपास। फिर डिप करता गया करता गया करता गया, और ये इस टाइम पे काफी अंडर वैल्यूड हो गया था। अक्टूबर के आसपास, 30 अक्टूबर 2020 के आसपास ये काफी अंडर वैल्यूड हो गया था, और फिर ये इसका पी चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन हमेशा अच्छा टाइम होता है खरीदने का, ओवर वैल्यूएशन नहीं होता है। तो अगर कोई अगस्त में खरीदता और कोई अंडर वैल्यूएशन के टाइम पे खरीदता, तो ऑब्वियसली काफी अच्छा रैली दिया है। ये काफी अंडर अंडर वैल्यू था सम टाइम बैक, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी, इस एरिया में काफी अंडर वैल्यू था, व्हेन इट वाज समवेयर अराउंड 14 का पी रेशियो। ये 1 साल तक अंडर वैल्यू रहा, फिर से काफी अच्छा रैली दे दिया, राइट। विल पी एंड प्राइस मूवमेंट एब्सोल्युटली मिरर ईच अदर? इट शुड, थोड़ा थोड़ा मिरर रहता है, बट थोड़ा सा, क्योंकि अर्निंग्स भी हर क्वार्टर चेंज हो रही है ना, तो पी रेशियो एंड प्राइस मूवमेंट्स आर ऑलमोस्ट, मतलब इट विल नॉट मिरर बिकॉज अर्निंग्स भी इंक्रीज होती है, तो आई डोंट थिंक इट विल प्रॉपर्ली मिरर एक्चुअली। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे भी अंडर वैल्यूड जोन में था, अभी ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जोन में आ चुका है। व्हाट इज द लाइफ टाइम एवरेज पी ऑफ आईटीसी? अगर 5 साल का देखेंगे तो लाइफ टाइम 5 साल का एवरेज इज समवेयर अराउंड 23। 5 साल का एवरेज इज समवेयर अराउंड 23। ठीक है, कैन यू सी दिस डॉटेड लाइन? दिस डॉटेड line is 23, right? So 5 साल का average is 23 की ratio. Less than 23 it was undervalued. Right now it is slightly overvalued. Right? अभी इसने काफी अच्छा रैली दे दिया है. So if I look at the current numbers, ये obviously I think 500 ₹450 के आसपास भाग गया है. इसलिए थोड़ा करेक्शन भी दे दिया क्योंकि काफी ओवरवैल्यूड जोन में जा रहा था. ठीक है. So preferably how do you determine the ideal time frame? 5 years is good enough. 5 साल में चेक कर सकते हो. 5 साल is a decent number. 5 years is a good enough time frame. क्योंकि 5 साल से पहले थोड़ा और लंबा चला रहा है, 5 साल इज फेयरली डिसेंट टाइम फ्रेम। आप लार्ज में जाओगे तो थोड़ा ट्रेंड्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, बट देखने को वो भी देख सकते हो। प्रेफरेबली 5 इयर्स इज अ गुड इनफ टाइम फ्रेम। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसका पी रेशियो देख लेते हैं। इज इट फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड? इज एचडीएफसी बैंक फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड? इट इज अंडर वैल्यूड राइट नाउ, बिकॉज 5 साल के टाइम फ्रेम में एवरेज इसका काफी ऊपर था। ये अभी अंडर वैल्यूड टेरिटरी में है, ये अपने लोएस्ट पी रेशियो के आसपास है। सो ये भी इसका लोएस्ट पी रेशियो था और ये अपने लोएस्ट पी रेशियो के आसपास है, तो इट इज स्लाइटली अंडर वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, प्रेफरेबली ऑलवेज बाय स्टॉक्स एट अंडर वैल्यूड एरियाज, नॉट एट ओवर वैल्यूड एरियाज और फेयरली वैल्यूड एरियाज। क्या क्या हम आलू उसके सही दाम पे खरीद सकते हैं और सस्ते में भी खरीद सकते हैं? महंगे में खरीदना गलती है, राइट? तो फेयर वैल्यू जोन इज ऑल्सो फाइन, अंडर वैल्यूड जोन इज ऑल्सो फाइन, बट ओवर वैल्यूड जोन इज प्रेफरेबली नॉट फाइन। जितना ओवर वैल्यू में लेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लम का बात है। वी शुड नॉट बी बाइंग एट ओवर वैल्यूड जोन्स बेसिकली, अंडर वैल्यूड इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, सो लार्ज कैप में हिस्टोरिकल पी रेशियो से कंपेयर करके बता सकते हैं ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, इन्फोसिस ले लेते हैं। इन्फोसिस का चेक कर लेते हैं कि इन्फोसिस फेयरली वैल्यूड, ओवर अंडर वैल्यूड है। इन्फोसिस आपका अगर हम पी रेशियो देखें तो इन्फोसिस फेयर वैल्यू के काफी पास है, स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, बट फेयर वैल्यू की काफी पास है। अगर 25 का उसका मीडियन है, 25 के आसपास का मीडियन है, उसके काफी पास ही वो घूम रहा है। ठीक है, सो इट इज क्वाइट क्लोज टू फेयर वैल्यूएशन। ठीक है, तो एनीवे, प्राइस टू बुक आई डोंट चेक। आई एम मोस्टली अ पी पर्सन, आई डोंट लाइक टू चेक प्राइस टू बुक रेशियो मच, उसका जरूरत नहीं होता कहीं। आई डोंट थिंक कोई खास यूज करता है प्राइस टू बुक रेशियो मार्केट में। प्राइस टू पी रेशियो इज लाइक डिसेंटली गुड इनफ, उसमें काफी समझ आ जाता है कि कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लार्ज कैप्स, जहाँ पे टाइम कंपैरिजन से आंसर मिल जाता है। अब स्मॉल कैप में टाइम कंपैरिजन से आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज स्मॉल कैप में चीजें रीलेट हो जाती हैं, और मतलब स्मॉल कैप में सेक्टर कंपैरिजन से काफी अच्छा आंसर मिलता है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड देखें ना, इफ यू लुक एट द चार्ट, अगर इसका हम फर्स्ट नंबर देखें, ऑल दिस इंडस्ट्रीज, इफ यू लुक एट द फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फर्स्ट नंबर? ईवी बाय सेल्स, रिलेटिव वैल्यूएशन, ये सब करने का जरूरत नहीं है प्रणव, सिंपल पी रेशो बहुत सिंपल है। सिंपल इज पावरफुल, सिंपल इन्वेस्टिंग इज पावरफुल इन्वेस्टिंग। द मोर सिंपल वी डू, द मोर पावरफुल इट इज, राइट? सिंपल इज पावरफुल इन इन्वेस्टिंग, एकदम सिंपल अच्छा काम करता है। ठीक है, शुड वी कंबाइन टेक्निकल एंड पी टुगेदर फॉर बेटर एक्यूरेसी? टेक्निकल की जरूरत नहीं है, पीस डिसेंटली गुड इनफ इंडिकेटर। अगर आपको करना है टेक्निकल कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर आता है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑलवेज कंबाइन देम, बट पी इज ऑल्सो डिसेंटली गुड इनफ। ओके, if I look at the first number for this chart, right, for this table, what is the most commonly occurring first number?
What is the most commonly occurring first number in this table? 30, right? 30 is the most commonly occurring first number. That is why on an average अगर P ratio 30 से कम है तो मोस्ट लाइकली वो कंपनी अंडर वैल्यू टेरिटरी में होगी. ठीक है. अगर P ratio 30 से कम है तो मोस्ट लाइकली वो अंडर वैल्यू टेरिटरी में होगी. राइट. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. ठीक है. एक्सेप्शन क्या है? कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सेप्शन है, इंफ्रा एक्सेप्शन है, बैंकिंग एक्सेप्शन है. इसमें हम मेटल्स वेटल्स भी लिख दो, मेटल्स भी कर दो, मेटल, पेपर एक्सेट्रा, ये सब एक्सेप्शन है. ठीक है. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. If I look at this company, right? Let's look at this company. KPI Green Energy. Is this company overvalued, undervalued, fairly valued? Is this company overvalued, undervalued, fairly valued? It is undervalued to fairly valued, but it is close to undervaluation territory because 25 का P ratio है. It is under to fair, I would say. Exact तो देखो कोई नहीं बता सकता कि अंडर है फेयर है. अंडर टू फेयर की कैटेगरी में आएगा. आई वुड कॉल इट अंडर टू फेयर वैल्यूएशन. ओवर वैल्यूड तो कहीं से नहीं. इट इज फेयर से कम ही बोलूंगा मैं हल्का सा. अंडर टू फेयर की कैटेगरी में इसको आप बोलोगे बिकॉज इट्स सो द पी रेशियो इज एक्चुअली 25. इफ आई लुक एट दिस टेबल तो इलेक्ट्रिक जो आपका क्लीन एनर्जी है 20 से 50 में लाई करता है. तो ये वेरी क्लोज टू 20 है. इट इज वेरी क्लोज टू अंडर टू फेयर वैल्यूएशन टेरिटरी. ठीक है. इट इज नॉट ओवर वैल्यूड बाय एनी मीन्स ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है. इट इज अंडर टू फेयर वैल्यूएशन. ठीक है. लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल. If I look at this company, Bari Renewable Technologies, 50p ratio, overvalued, undervalued, fair valuation. Overvaluation, undervaluation, fair valuation. It is slightly over. I would say it is almost at the fag end of over. Over to fair, मतलब fair to over बोलोगे. Almost over के पास पहुंच चुका है. 50 पे पहुंच चुका है. Slightly over के पास पहुंच चुका है. Fair to over, you can say, right? So fair to over is a decent guess for this kind of a. इनफैक्ट 50 है मैं तो ओवर के पास ही बोलूंगा. मेरे हिसाब से ओवर के पास ही. तो स्लाइटली ओवर है या फेयर भी बोल सकते हो. समवन कैन आर्ग्यू बोथ वेज, बट फेयर टू ओवर है. ठीक है. लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल. दिस कंपनी फैंटम डिजिटल. इट्स अ आईटी सर्विस कंपनी, मतलब वीडियो इफेक्ट्स कंपनी है. वीडियो इफेक्ट्स इज वेरी क्लोज टू आईटी सर्विस. 37 पी रेशियो. फेयर ओवर अंडर. लेट अस लुक एट द चार्ट. फेयर ओवर अंडर. आईटी सर्विस में 30 to 50 आता है. फेयर ओवर अंडर. इट इज फेयर वैल्यूएशन मोटा मोटी 37 पे बैठा है. लिटिल मोर देन, मतलब कोई बोल सकता है हल्का सा फेयर से ज्यादा होगा, बट फेयर ही बोलूंगा, मतलब मोटा मोटी फेयर के आसपास ही रहेगा. राइट. अगेन नॉट क्लोज टू ओवर वैल्यूएशन टेरिटरी. ठीक है. सो काफी वो है कि भाई कि इट इज क्लोज टू सॉर्ट ऑफ फेयर टेरिटरी. राइट. लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल. लेट अस लुक एट दिस कंपनी, योर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस. 14p ratio. Over fair under. If I look at the chart, right, is it over fair under? NBFC 20 to 40 के आसपास रहता है. फेयर टू अंडर बोलेंगे, अंडर टू फेयर. इट इज इधर फेयर और अंडर. राइट. पी से हो जाता है, पी से भी काम चल जाता है, फाइनेंशियल से भी पी से काम चल जाता है. अंडर टू फेयर में बेसिकली हो जाएगा आपका. ठीक है. देन लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल मे बी. लेट्स टेक ब्रांड कॉन्सेप्ट. लेट्स टेक ब्रांड कॉन्सेप्ट. 40p रेशियो. इट्स बैग बेचती है, एफएमसीजी टाइप की कंपनी. एफएमसीजी फेयर है, अंडर है, ओवर है. 40p रेशियो देख लेते हैं यहाँ पे. अगर हम इसमें एफएमसीजी देखें 30 to 100 रहता है. फेयर जोन में लाई कर रही है. स्लाइटली अंडर टू फेयर है, मतलब फेयर जोन में लाई कर रही है. ओवर तो नहीं है, फेयर जोन में लाई कर रही है मेरे हिसाब से. ठीक है. फेयर जोन में है. ओवर तो फेयर टू शायद, मतलब फेयर जोन में मेरे हिसाब से. ओवर तो नहीं बोल सकते, और ग्रॉसली ओवर तो नहीं है. राइट. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक. फेयर ओवर अंडर. फेयर ओवर अंडर. ये क्लियर ओवर जोन में है. ये क्लियर ओवर जोन में, बट इसका एक रीजन है कि ओवर वैल्यूड है. इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट आने वाला है. तो फास्ट ग्रोथ, सुप्रीमली फास्ट ग्रोथ कंपनीज कैन स्टे ओवर वैल्यूड. ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यू सारी खराब होती है, बट एज अ न्यूबी इन्वेस्टर नेवर बाय ओवर वैल्यूड कंपनीज.
I personally don't like overvalued companies basically. And if you look at it, right, इसका P ratio एकदम भाग गया था. Was buying Olectra at 170 P ratio good idea? On 14th July 170 का P ratio भाग गया था. Was buying Electra at this P ratio a good idea? Yes or no? 170 तो ग्रॉसली ओवर वैल्यू टेरिटरी में था. मतलब इसका अगर आप लोएस्ट में देखोगे तो 70 के आसपास गया है. 170 तो ग्रॉसली ओवर वैल्यू में था. तो बाइंग ओलेक्ट्रा हेयर ऑन दिस डेट वॉज अ वेरी बैड आइडिया. जिन्होंने इस दिन खरीदा था 14 जुलाई, उनको वैल्यूएशन नहीं पता थी कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू टेरिटरी में भाग चुका है. इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू बाय ओलेक्ट्रा ऑन दिस डेट. क्लियरली वो करेक्शन दिया ही दिया है. ठीक है. So buying at overvalued territory is not a sort of a good idea, right? So I hope this is sort of clear, right? What is a good idea, what is a bad idea? Let me show you some more examples of very good ideas. This is an IT service company, Orion Pro. Okay. This company had a P ratio of 7 on 17th March. IT service company 7 P ratio. Good idea, bad idea. IT service company 7 P ratio. Good idea, bad idea. वेरी गुड आइडिया. सुपर चीप, सुपर सस्ता मिल रहा है. आलू 1 रुपए के मिल रहे हैं. 1 रुपए किलो के आलू अच्छे होते हैं. जिसने खरीदा उसका साथ क्या हुआ? दिस इज वॉट यू कैन सी. सीधा 300 रुपए से 1000 रुपए. 1 रुपए किलो के उसने आलू खरीदे और बहुत पैसा बना लिया. राइट. क्लियरली इट वॉज अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू बाय दिस कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल. एंड ग्रीन एनर्जी कंपनी. ग्रीन एनर्जी कंपनी एट 10 का पी रेशियो. 10 का पी रेशियो था. 10 पे अच्छा आइडिया, बुरा आइडिया है. 10 P ratio green energy company, constantly increasing profits. Good idea, bad idea? Good idea. At 10 P ratio, good idea. See what happened. See the price doubled. Right? If we buy companies cheap and कंपनियां cheap मिलती हैं, 1 रुपए के आलू खरीदेंगे तो पैसा बनाना काफी गारंटी हो जाता है. महंगे आलू खरीदेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है. बट ओरायन प्रो स्टिल ओवर एवरेज पी एट 7.4. एज ए सेट स्मॉल कैप्स में एवरेज से कंपेयर नहीं करना है. स्मॉल कैप में सेक्टोरल से कंपेयर करना है. टाइम नहीं करनी है. टाइम लार्ज कैप में करना है जहां पे हिस्ट्री है. स्मॉल कैप में इतनी छोटी कंपनी क्या हिस्ट्री होगी इसकी. स्मॉल कैप में टाइम कंपैरिजन नहीं करना है, सेक्टर कंपैरिजन करना है. लार्ज कैप में टाइम कंपैरिजन करना है, सेक्टर कंपैरिजन नहीं करना. ठीक है. सो या प्रशांत जी, ओरायन प्रो में टाइम कंपैरिजन करना ही नहीं, सेक्टर कंपैरिजन करना है. सेक्टर कंपैरिजन के हिसाब से आपका वो चीप था. स्मॉल कैप में वी हैव टू डू सेक्टर कंपैरिजन ओनली. ठीक है. In large caps we have to do sector comparison. In large caps you have to do time comparison. In small caps we have to do sector comparison. Okay, one more example. Okay, one more example. एक और चीज से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं. टाटा स्टील अगर आप देखें 71 पी रेशियो. खैर ये तो चलो अलग ही लेवल पे. कुछ और देख लेते हैं. सॉरी. पेपर सेक्टर देख लेते हैं. हाँ. इज दिस कंपनी 4 पी रेशियो? ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड? ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड. 4 पी रेशियो है, 4 का है. अंडर नहीं है ये फेयरली वैल्यू है क्योंकि इसके पूरे सेक्टर में 4 के पी रेशियो मिलते हैं. अगर आप पूरा सेक्टर देखेंगे, पूरा सेक्टर 4 के आसपास में पड़ा हुआ है. 4 3 7, 4 3 3 5. तो पूरा सेक्टर 4 पे ही पड़ा है, तो ये फेयर वैल्यूएशन 4 के पी रेशियो पे भी. तो थोड़ा अंदाजा यहाँ से भी मिल जाता है कि यार ये फेयर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन है. सारे पेपर कंपनियों को 5 का पी रेशियो मिलता है. तो ये सारा ये सेक्टर फेयरली वैल्यूड है, इसमें कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं है, भले ही 4 का पी रेशियो है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा. कॉमोडिटी टू पेपर एट 4 पी रेशियो, इट इज सॉर्ट ऑफ फेयरली वैल्यू. ठीक है. EMS sector, see EMS is a high growth sector. 50 to 100 P ratio at 50 to 100 is a decent zone for EMS sector. Someone is saying EMS sector, EMS में I can write 50 to 100. ठीक है. 50 to 100 is a fair valuation for EMS sector. So you can see EMS here with this comparison.
50 to 100 is a good range for this kind of a sector. It's like defense. Okay, defense and EMS it's like similar basically. Okay, robotics. See, रोबोटिक्स 30 के पी पे सस्ता है, रोबोटिक्स से भी हाई का ही दोगे, 40-50 का दे सकते हो रोबोटिक्स में भी, 50 के आसपास का रहेगा पी रेशो, फेयर पी रेशो का बोलना होगा। एनीवे हर एक सेक्टर में नहीं जा सकते, इट विल बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, so I hope this comparison is clear, right? How to say whether a company is overvalued, undervalued, fairly valued. ठीक है, okay, now let us look at um, let us look at I hope this is clear. How to calculate P correctly is clear. How this is a very important part, how to estimate 1 year forward price. Okay, this is the most important learning of this class, and therefore everyone must pay attention. How to estimate 1 year forward price. Chemical sector is a commodity sector. When does a P rating happen? When a company shows remarkable consistency. That's when a P rating happens. Okay. Anyway, okay. Now let us look at some um, okay, let us look at, and I'll show you how to do research also, right? And guys, we are taking examples of a lot of stocks. Nothing is intended to be a buy sell recommendation. What we are studying today is works 80% of the time. मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, ऐसा हो सकता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक और अंडर वैल्यूड हो गया। 80% चांस से काम करता है, 100% से चांस से काम नहीं करता है। So there is a probability attached to whatever you are studying. This is not science, this is arts. Arts में nothing is guarantee. It's a high probability event, right? So don't take anything as a buy sell recommendation, please. That's important. There is an off chance कि things can like probability है कि this will not work. 20% probability, 10% probability तो है कि this will not work. ठीक है? Anyway. So March 23. Oh, sorry. So these 42 companies posted excellent results in this quarter. ठीक है? One of these companies, Sangvi Movers. ठीक है, Sangvi Movers, which posted good numbers. Now let us take Sangvi Movers example and do some predictions. Firstly, tell me, is Sangvi Movers a good business or a bad business? Is it a good business or a bad business? Is it increasing profits? Yes or no? It's a good business, right? Yeah, yeah. Okay. Does this company have a profit uptrend? Yes or no? Does this company have a profit uptrend? Yes or no? Is it constantly increasing profits? It does have a profit uptrend. लगातार 7 क्वार्टर से किया है. Okay. Now, very basic question. According to you, but see March 18 versus March 17, वो बहुत पुराना हो गया, 5 साल पुराना। सी ये सब थोड़ा रिसेंटली देखना चाहिए। 5 साल पुराना तब बिजनेस खराब था। इस टाइम पे सी इस टाइम पे बिजनेस खराब था। नो वन इज सेइंग दैट इस टाइम पे बिजनेस अच्छा था। क्या आप सांघवी एनर्जी को मार्च 2019 में खरीदते? Was Sangvi Movers a good business in 2019? Yes or no? It was not a good business in 2019. It was not a good business in 2020. It became a good business here. In fact, it was becoming a bad business in sort of in this area, right? यहां से यहाँ पे वो अच्छा बिजनेस बन गया, यहां से यहाँ पे वो काफी खराब होता गया। This is not a growth company. This company is a wind sector proxy. Wind sector is a growth sector. This is a renewable energy sector proxy. इसके क्रेन रेंटल रिन्यूएबल एनर्जी में यूज करते हैं। लैकिंग कंसिस्टेंसी, 10 साल से कंसिस्टेंट नहीं है, पिछले 3 साल से फेयरली कंसिस्टेंट है। तो ये पिछले 3 साल में अच्छा बिजनेस बन गया, उससे पहले अच्छा नहीं था। ये यहाँ पे अच्छा नहीं था। इट वॉज अ बैड बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी दिस कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन सितंबर क्वार्टर? व्हाट विल बी दिस कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन सितंबर क्वार्टर? गेस मारना है, गेस करो। सितंबर क्वार्टर में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा? सिंपल ट्रेंड से कितना आएगा? someone is saying 95, someone is saying 90, someone is saying 90, someone is saying 92। अगर मेरे को गेस मारना हो, मैं बोलूंगा कंजर्वेटिव गेस मारते हैं।
कंजर्वेटिव गेस क्या होगा? लेट अस मेक द कंजर्वेटिव गेस. 88. Is 88 a conservative guess? Yes or no? 88 is a fairly conservative guess, right? For operating profit. And what is the conservative guess for net profit? Conservative guess for net profit? 42, right? 42 is the conservative guess for net profit. Is that correct? Let's not be aggressive. As a conservative guess for net profit, well, is 42 a good number? Is 42 a good number for a conservative guess on net profit? Yes or no? 42 is a fairly conservative uptrend here. Most likely 42 is a conservative guess. Decent guess, right? अच्छा, one more question. Is it guarantee कि 42 ही आएगा? क्या 42 से कम नहीं आ सकता? गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है, आ सकता है. ठीक है, चांस तो है, कम चांस है, आने को आ सकता है. ठीक है, नो गारंटी. प्रोबेबिलिटी इज हाई कि 42 के आसपास रहेगा. बट बट गारंटी कुछ नहीं. डिपेंड्स ऑन पाइपलाइन. हम पाइपलाइन मैथ देखेंगे, पाइपलाइन मैथ भी करेंगे. बट अभी अभी सिंपल सिंपल मैथ देखते हैं, सिंपल ट्रेंड मैथ देखते हैं. ठीक है, ट्रेंड मैथ का कर सकते हैं. Someone is saying, can I take average of 38 and 42 net profit? कर सकते हो, आपका जो गैस मारना है मार लो. मैं 42 गैस करूंगा क्योंकि क्लियर अप ट्रेंड है, बट कोई 38 भी कर सकता है. आपको और कंजर्वेटिव होना, 38 कर सकते हो. ठीक है, सितंबर में 42 आया. ठीक है, व्हाट विल बी दिस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द एंटायर ईयर आफ्टर 1 ईयर? एक साल बाद इस कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालना है. एक साल बाद इस कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट कितना होगा? 42 मल्टीप्लाइड बाय 4. Is 42 multiplied by 4 a good guess for this company's net profit after 1 year? 42 multiplied by 4. Does everyone agree that 42 multiplied by 4 is a good guess of this company's net profit after 1 year? Right? So basically, if I look at the math, right? Let's do some maths, okay? This company has a P of what? इस company का P कितना है? Sangvi, right? Sangvi. नंबर डाल लेते हैं. 20 का P रेशियो है, 2700 का मार्केट कैप है, और 20 P रेशियो, 2700 मार्केट कैप. पैट कितना है इस कंपनी का? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंटली 139, राइट? 139, 139 का पैट है. 1 ईयर फॉरवर्ड पैट कितना है? एक साल बाद कितना प्रॉफिट होगा? 42 इंटू 4, राइट? 42 इंटू 4, 168, राइट? नाउ 20 पे कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है? 20 पे कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर है, फेयरली है? ये क्लीन एनर्जी टाइप की कंपनी है. 20 पे ओवर है, अंडर है, फेयरली है, अंडर वैल्यूड है, राइट? 20 पे तो क्लीन एनर्जी में बहुत ही स्टार्टिंग ऑफ वही है, अंडर वैल्यूड ही बोलेंगे, फेयर तो नहीं बोल सकते. अगर आपको बहुत आगे वो करना है, फेयर बोल दो. अगर चलो आपको बहुत कंजर्वेटिव गेस करना है, आप बोलो इसका पी भी नहीं बढ़ेगा, एक साल बाद इसका पी 20 का ही रहता है, जितना आज है उतना ही पी रहता है. एक साल बाद इसका मार्केट कैप कितना होगा? मार्केट कैप इज पैट मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, राइट? तो 20 इंटू दिस नंबर. एक साल बाद इसका 3360 का मार्केट कैप रहेगा. इज दिस क्लियर? द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 168, which is 42 into 4. PE after 1 year is 20. हमने सेम ले लिया. 1 year forward market cap, it is forward PAT into PE 3360. अपसाइड कितना हुआ? अपसाइड हुआ दिस अपॉन दिस -1. 24% अपसाइड है बेस्ड ऑन दिस मैथ इन दिस कंपनी. अगर आप लकी हुए और पीई भी इसकी रेटिंग हो गई, क्योंकि कंपनी 20 पे अंडर वैल्यूड है, लेट्स इसको 25 का पी मिल गया, 56% का अपसाइड आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू द फेयर वैल्यू मैथ. ओके, कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंपनी आफ्टर 1 ईयर. करंट प्राइस कितना है इसका? इसका करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है 638 रुपए, राइट? 638 रुपीज, 638 रुपीज. एक्सपेक्टेड 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस, 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस
this into 1 plus this basically, right? So does everyone understand this math basically? One-year forward PAT is 42 multiplied by 4, which is 168 crore. P after 1 year is 20. 1-year forward market cap is 20 multiplied by 168, which is 3360. Current market cap is 2700, right? Uh, about the actual value. Yeah. Market. This is your. I show this on the self-help tool also. Don't worry. Self-help tool में ही करते हैं. ठीक है. So let us look at this tool which we have built. Okay. This tool. Let's look at this tool. Self-help tool. Okay. Have you used the self-help tool? Have you used the self-help tool? Yes or no? So let us play with the self-help tool. It's a very powerful tool. Okay. Uptrend. We are talking about uptrend. Yes or no? Let us put uptrend here because we are talking about uptrend. Right? Profit uptrend की बात की हमने. Search company Sangvi Movers. What is the market cap of Sangvi Movers? 2700. 2700. What is the share price? 638. Right? Um, what is the TTM sales? 505 and PAT is 139. 505 and 139. 505 and 139. Last quarter profit कितना था? 42. फेयर पी कितना देना चाहते हो वो हमारे ऊपर है. लेट्स से 20 दे देते हैं इक्वल टू करंट पी. ठीक है. कैलकुलेट द फॉर्मूला. सारा फॉर्मूला जो था वो यहाँ पे आ गया है. 1 year forward profit कितना आएगा? 168 crore. Is this clear to everyone? 42 multiplied by 4. Right? 42 was the last quarter profit multiplied by 4, 168 crore. Expected 1 year forward market cap, fair PE into expected 1 year forward profit, which is 3360. Right? Upside potential 24%. Right? And price after 1 year is 791. Is this math clear to everyone? All formulas are written here. ये कैसे कैसे math हो रही है? Is this clear to everyone? Please show again. Okay, let me show the math again. Does uh, does everyone understand 168 crore is a profit after 1 year? 168 crore is a profit after 1 year. Market cap is profit multiplied by P ratio. So you multiply profit is 168 multiplied by 20, 3360 forward market cap. Current market cap is 2700. Forward market cap is 3360. Upside is 3360 upon 2700 minus 1. ठीक है. This is upside. Current price is 638. Future price is 790. ठीक है. So I hope this is clear. Upside is 3360 divided by 2700 minus 1. And then you multiply it by the current price and then you get the 1 year forward price. In case of profit uptrend, you can use this tool. Okay. Where is this tool? It is there on the website in the self-help section. Self-help. Can you see self-help? Can everyone see self-help? This is a free tool, so you don't even have to pay anything for it. It's a free tool. Anyone can use it. Okay. If I make a data error in this tool, iOS app में self-help है ही नहीं, शायद बनाया नहीं अभी, शायद बनाना है. If I make data error in the tool, let's say you write 100 by mistake here. This will give crazy answers. So please be smart in entering the data. This tool is as intelligent as the person using the tool. If you put in wrong data, ये कुछ भी दे देगा. अगर अच्छा डेटा दोगे तो सही आंसर देगा. डेटा खराब दोगे कुछ भी दे देगा. अगर 25 का पी देते हो, क्योंकि 25 पे ऑफ ईयरली वैल्यू हो जाएगा, तो भी सही आंसर दे देगा. 25 पे 56% हो जाएगा. ठीक है. अगर कोई 30 का पी रेशियो देना चाहता है तो आप
इस पे बेसिकली कर सकते हो 30 के पी रेशो 87, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू प्ले अराउंड विद द टूल, राइट। कैन वी टेक अनदर एग्जांपल हियर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। किंगफा का ले लेते हैं, किंगफा साइंस। समवन इज सेइंग तेजस, ओके, तेजस नेटवर्क से लेते हैं। इज तेजस अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यस और नो? तेजस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, and as the first rule, we will stay away from losses. We stay away from losses. So tool will not work here. No conventional logic works here basically, right? So we can't do this in a loss-making company ever. ठीक है? We will take phantom example also, but in some time. ठीक है? We will take phantom example in some time. Let's take Kingfa. ठीक है? Kingfa में 2800 crore is the market cap. अच्छा, पहले चेक करते हैं अपट्रेंड है कि नहीं है. Is there uptrend, yes or no? Is there uptrend in the company, yes or no? Yes, there is uptrend in the company. Clear uptrend. ठीक है. What is the 1 year forward profit? 1 year forward कितना आएगा? मोटा मोटा 140. 35 into 4, 140 crores. 1 year forward roughly, right? Anyway, नंबर डाल लेते हैं जल्दी से. 2800 करोड़ का वैल्यूएशन है. Someone is saying June quarter is less. इस क्वार्टर में वॉर हो गया था, तो इन्फ्लेशन के चक्कर में सबके प्रॉफिट्स गिर गए थे. इसको मत देखो, बाकी सेक्युलर अपट्रेंड ही है. वो वॉर हो गया था, वो वॉर का अलग चक्कर होता है उसमें, ठीक है. एनीवे 2800 करोड़ का वैल्यूएशन है. और बाय द वे वन मोर थिंग, ओके, वन मोर थिंग. सो यू कैन, ये जो हमने मैथ किया ना, वन इंटरेस्टिंग थिंग, ओके, यू कैन ऐड दिस इनटू योर वॉच लिस्ट. यू कैन ऐड दिस इनटू योर वॉच लिस्ट, ओके. ये वॉच लिस्ट में चला गया. अब आप माय वॉच लिस्ट में जाएंगे ना, माय वॉच लिस्ट में आपको ये सेम चीज मिलेगी यहाँ पे, सांगवी मूवर्स. कैन यू सी दिस मैथ इन माय वॉच लिस्ट? सांगवी मूवर्स, अपसाइड पोटेंशियल, expected price and so on. So can you see this my watch list feature in Sovereign? Yes or no? So you can do the math and save it also. आप सेव कर सकते हो एंड आपका सब कुछ बेसिकली पड़ा रहेगा यहीं पे, ठीक है. योर एंटायर माइंड विल गेट सेव्ड, बेसिकली योर लॉजिक्स विल गेट सेव्ड कि भाई हमने कैसे मैथ किया था एंड हाउ आर वी प्रेडिक्टिंग बेसिकली, राइट. वेयर इज दिस वॉच लिस्ट फीचर? आपको यहाँ पे दिख जाएगा माय वॉच लिस्ट है. ए पे क्लिक करेंगे तो आपको माय वॉच लिस्ट दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है. एंड यू कैन ऐड स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट बेसिकली, ठीक है. सो आई होप यू कैन सॉर्ट ऑफ प्ले अराउंड. इट इज डेट वाइज, जो पहले जाएगा वो ऊपर आ जाएगा. चाहे तो डेट भी डाल देंगे, डेट का एक वो मैं डलवा दूंगा, ठीक है. एनीवे, सो आई होप दिस इज क्लियर. किंगफा का कर लेते हैं जल्दी से. 2800 करोड़ का मार्केट कैप है, 2321 का प्राइस है. किंगफा कर लेते हैं. अप ट्रेंड है, किंगफा है, 2800 करोड़ है, 2321 शेयर प्राइस. सेल्स कितना है? 1396 एंड 114. 1396, 114. अदर डेटा, लास्ट क्वार्टर 35, राइट? 35. पी रेशियो कितना देंगे? 25. एंड कैलकुलेट. 1 year forward profit is 140 crore. Expected 1 year forward market cap is 3500 crore. Upside potential is 25%. And your expected price is 2901. ठीक है. So I hope this math is very clear कि कैसे काम करती है. It is simply into 4 math. ठीक है. What is the assumption in this math? Assumption is that the uptrend continues. This line is very important, okay? The math breaks if uptrend breaks. Is this clear to everyone? The math breaks if uptrend breaks. Is this line clear to everyone? The math breaks if the uptrend breaks, right? What's the calculation if it's loss making? Loss making से तो दूर ही रहना है, मतलब we can't enter a loss making company. लॉस मेकिंग कंपनी में कोई लॉजिक नहीं लगता है उसमें.
मार्केट रैंडमली कुछ कुछ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है वो थोड़ा समझना, वो उसका कोई खास लॉजिक नहीं होता है, मतलब वट एवर मार्केट इज डूइंग इन अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो लॉसेस कांट बी प्रेडिक्टेड, लॉस बना रही है, लॉस मेकिंग कंपनी का थ्योरेटिकल वैल्यू तो जीरो होता है, बट ठीक है मार्केट फिर भी वैल्यू देती है कभी कभी, बट लॉस मेकिंग कंपनी में कोई लॉजिक लग नहीं सकता है। ठीक है। ओके, is here anyone who wants to buy a loss making company? I launched a poll. Okay, would you want to buy a loss making company, yes or no? Buy a loss making company, yes or no? Right. Someone is saying वो, someone is saying कि it will turn profitable. वो कर सकते हो बट उसको टर्न करने दो ना, मतलब why do you want to anticipate it, right? So preferably never buy a loss making. So you can see the overwhelming response. No one wants to buy a loss making company, right? Market में loss making company को चलाने वाले, how many yes you got in the poll? 57 people have said a yes out of 58. Okay. Someone is saying new age tech companies. See, loss तो बुरी बात ही होती है. Loss making is always bad, चाहे आप टेक कंपनी हो चाहे आप ना हो. Loss is always a bad thing. 59 out of 60 people have said a no, that we will not buy a loss making company. ठीक है. Anyway, so what's the question? SSG, I didn't see the question, so you can ask the question anyway. So no one wants to buy a loss making company basically. I think that's the overwhelming response. Okay. I hope this math is clear. Okay, let's take a poll again. And poll. Can you please share the Excel sheet? ये tool ही बना हुआ है ना, तो this tool is there. You can play around with the tool. You can, I will, you can play around with the tool, so you will see basically ये math कैसे काम करता है. So I will take another poll. Um, Another poll. Okay, just one sec. Tool is on website. That's correct. Yeah, tool is on website. Did you understand the into four math, the uptrend math? Yes. One second. No. ठीक है. Say okay. Launch. Did you understand the uptrend math? Yes or no? Yeah. Can everyone vote? मतलब it will be very, it's very interesting for me to see कि भाई कितना what's a rate. Uh, can everyone vote? Can others vote as well? Yes, the recording is already available on the website. Recording is already available. थोड़ा पुराना सेशन है, but it is already available in sovereign.com/education. ठीक है. So please do watch the recording as well. See, मैं तो हर हफ्ता ही सेशन करता हूँ, कोई भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कंटेंट सिमिलर होता है. So just FYI, 93% people have understood, 7% people have not understood, which is a decent rate. I think the ones who have not understood, please do watch the recording and you will be able to understand it as well. ठीक है. So we'll take a break now. DCF is same like the tool. See, DCF की कोई जरूरत नहीं है. DCF I don't think क्यों बनाया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. DCF is a, see, the P ratio of a company is derived from the DCF model. बट वो पी रेशियो में सब कैप्चर हो जाता है, तो डीसीएफ की कोई जरूरत नहीं है. इफ यू आर अ प्योरिस्ट, यू कैन सॉर्ट ऑफ डिराइव वैल्यू फ्रॉम द, यू कैन डिराइव दिस फ्रॉम द डीसीएफ मॉडल एज वेल. ठीक है. सेशन इज अप टू 6 PM, 6 बजे तक सेशन. ओके, हाउ इज द सेशन सो फार? आई टेक अ ब्रेक हियर नाउ for 2-3 minute, 3-4 minute break. How is the session so far? Right. All right. So thanks so much, everyone. Let's take a 5 minute break and then we'll join back after 5 minutes. Okay.
So I think we can start again, right? So let's start again. Right. So okay, let's take another example. Okay. Uh, can you hear me? Yes or no? SSG, your question is very long. I think और वो बहुत specific है. Let me take the question at the end of the session. ठीक है? So I hope you can hear me, right? Let me take the next question. Okay. Okay. So let us look at this company, Phantom. Okay. Now, okay. So on 23rd May, on 23rd May 2023, this company had an order book of 170 crores. Can you read this information? Yes or no? Can you see that this company had a order book of 70 crore in last year on 23rd May 2023, right? Um, so, um, and after that, it got an order of around 120 crore over 4 years. So per year order कितना हुआ? 120 crore over 4 years. So per year order कितना हुआ? इस साल कितना करेंगे उसमें से? 30 crore, right? 30 crore. So what's the approximate order book for this year? 30 crore from this order and 70 crore from here. So what's the approximate order book of this company as on date? 100 crore. Is that clear everyone? 100 crore का मोटा मोटा order book है, right? 100 crore and your 70 crore and your 30 crore from here. Is that clear to everyone that this company has a 100 crore order book? Yes or no? Let me just ask a poll again. Phantom has 100 CR order book. Yes or no? Yeah. So yeah. Anyway, so I hope everyone is clear that 100 crore order book of Phantom. Okay. Now, let us look at some data. Okay. Let us go to the Excel and write this. Order size is 100 crore. Execution period is 12 crore, 12 months. 12 months, right? 100 crore order book to be executed in 1 year. Is that correct? Yes or no? 100 crore order book, 12 months your execution period. What's the expected revenue after 1 year? Expected revenue after 1 year is 100 crore. I hope that's clear to everyone. कि 100 crore का order revenue आएगा मोटा मोटी 1 साल बाद approximately. Okay. Now, what is the margin percentage of Phantom? Let us check. Okay. What's the margin percentage of this company? So 58 crore sales, 16 crore net profit. So what's the profit margin? 16 divided by 58. Is that correct? The operating profit margin is 16 divided by 58. Is that correct? Yes or no? Yes or no? 16 divided by 58. Right? So let us go there. Operating profit margin is 16 divided by 58. ठीक है तो roughly 25. तो what's the PAT after 1 year? 28% operating margin. PAT after 1 year कितना आएगा? 28 करोड़ का PAT आएगा. Is this clear? Are these 5 lines clear to everyone? 100 crore is the order book.
12 months is the execution period. 100 करोड़ का ऑर्डर 12 महीने में एग्जीक्यूट करेंगे. रेवेन्यू कितना आएगा? 100 करोड़ रुपए का. 28%, 28% is the PAT margin. What's the PAT after 1 year? 28 crore. I hope that's very, very clear. How did we derive the PAT margin? From here. ठीक है. Current sales 58, current profit 16 crore, profit margin 28%. I hope all these lines are clear. That this company will do a PAT of 28 crore after 1 year. Right? I hope this is very, very clear to everyone. Now, 1 year forward PAT is 28 crore. What P ratio do you want to give this to this company? 30 का दे दो. Current P ratio is also 35. ठीक है, slash current P ratio. तो आप 30-35 का दे सकते हो. So what is the current P ratio of this company? Let us check. The current P ratio is 37, but 30 का आप दे सकते हैं. IT services में 30 का मोटा मोटी होता है. So let us give it 30 P ratio, right? Because if I look at our table, we learned that 30 का मोटा मोटी चलता है in IT services, 30 to 50. तो 30 का दे देते हैं. So 30 का P ratio दे दिया. What is the 1 year forward market cap? 828 crore. Is this clear? 828 crore. 30 multiplied by 28. Right? 1 year forward market cap is P ratio multiplied by PAT. Right? हमने स्टार्टिंग में यही सीखा था कि P ratio is market cap divided by PAT and market cap is P ratio multiplied by PAT. Right? So 1 year forward market cap is 828. Right? What's the current market cap of this company? 598 crore. 598 crore. What's the upside potential? Sorry, 598. What's the upside potential? 38%. Right? So 38% is the price upside in this company after 1 year, based on this order book math. Is that clear to everyone? Yes or no? That 38% is the price. From which price? From the current price. See, a price upside and market cap upside are the same thing. So from the current market cap upside is 38%, and from the current price also upside is 38%. So I will repeat again. Where to find TTM sales and TTM net profit in Screener? You can just go down here. I think Screener doesn't give for this company. इस company का वो देता नहीं क्योंकि SME है. So therefore Screener will not give for this company. ये आपको Sovereign के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा. So you'll have to find this company in Sovereign only. Do the companies have to report order cancellation also? Yes, they have to report order cancellation. That's correct. If they declare the order, they have to declare the order cancellation as well. ठीक है. So typically orders cancel नहीं होते. ये Netflix का order है. Netflix बहुत दिमाग वाली company. Netflix का order cancel होना बहुत rarity है. It will not mostly cancel. Right? How do you do this using self-help tool? Self-help tool में भी देख लेते हैं. ठीक है. Let's go to self-help. Which category? Large order. Search for a company, Phantom Digital. Does Sovereign have TTM numbers? Yes, Sovereign has TTM numbers. You can go to Sovereign Times and check out. If you go to Sovereign Times, right, you will be able to see the TTM numbers. तो Phantom Digital में चले आते हैं. TTM यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Sovereign. Can you see TTM numbers in Sovereign for the company? When we cover a company, we do write TTM numbers. ठीक है? So you can see the TTM numbers within Sovereign. Anyway, let's go to self-help. Large order, Phantom Digital. What is the market cap of this company? Roughly 598. 598 crores. What's the share price? Roughly 500. TTM sales is 58 and 16, which is the profit margin. 100 crore order book. Your 12 months is the timeline. What's the fair P ratio you want to give this company? 30. Calculate. And you get the answer. 1 year forward sales is 100 crore. Clear to everyone? Yes or no? Is the 1 year forward sales 100 crore? Yes or no? Yes. 1 year forward profit 28 crore because 28% is the profit margin percentage. Expected 1 year forward market cap
is 30 fair P ratio into 28 crore, which is 828 crore. Upside potential is 39%. Expected price after 1 year is 695. Is it guaranteed that the price will be 695 after 1 year? Yes or no? Is it guaranteed that the price will be 695 after 1 year? No, not at all. This is just a theoretical estimate. No, not at all. Price की कोई guarantee नहीं है stock market में. We are just estimating, right? Theoretically, this is a number, but it can vary in reality as well. Okay. Now one more question. 28 crore is the annual number, right? So is this company on track to achieve 28 crore? Do you think that based on quarterly numbers, is this company on track to achieve 28 crore? Yes or no? Is this company on track to achieve 28 crore? We can clearly see a increase in profits, right? Someone is saying 6 into 4 is 24, but ये uptrend पे है ना, तो number बढ़नी चाहिए. तो there's a clear step jump here. 4 से 6 हो गया है, अगला 6 से 8 हो गया तो clearly बढ़ जाएगा, right? तो 24 के रन रेट में तो अभी बैठी है. अगर ये 6 7 8 9 कर दिया, लेट्स से नंबर 6 7 8 9, आपका 28 पहुंच जाएगा ना, 6 7 8 9 पे clearly. So clearly this company is sort of no dotted line for average P for Phantom. Phantom is a small cap, not a large cap. Time comparison, not possible. Do you appreciate that time comparison is not possible in small caps? Yes or no? Phantom is a small cap, time comparison, not possible. Only sectoral comparison possible. Right? So I hope this is very, very clear that time comparison is not possible in Phantom. Okay. So is the large order math clear to everyone? Yes or no? Is the large order math clear to everyone? Yes or no? Can you say yes if it is clear? It is simply order book. Order book से PAT, order book को PAT से multiply करो, PAT percentage से calculate 1 year forward profit, multiply by P ratio, and you get the number, right? Do you understand the algorithm we are following? Algorithm is simple. Calculate 1 year forward profit, multiplied by P ratio which you find fair. Get 1 year forward market cap. Divide 1 year forward market cap by current market cap, and get the upside. Is this algorithm clear to everyone? Yes or no? Okay. Someone is asking what are the risk factors here. So Phantom is a company which hires people and it needs people to execute the orders. So what's the risk involved? The company will not be able to hire people to execute the order. That's a potential risk. Is that a high risk or a low risk? Is that a high risk or a low risk? That Phantom will not be able to hire people to execute this. High risk or low risk? It is hiring हो जानी चाहिए. Hiring इतना कोई मुश्किल नहीं है. मतलब if you give money to people, they will join you, right? So it's not a very high risk, basically. Right? Someone is saying to repeat this again. I will repeat it quickly once more. Phantom sales is 58 crore. Is that clear to everyone? 58 crore is the sale. Current profit is 16 crore and profit margin is 28%. I hope 28% is clear. Is 28% clear, Vivek bhai? Now, 100 crore is the order book as per information. Right? We found that information. 12 months is the execution period. So 100 crore into 28% is 28 crore. 28 is expected PAT after 1 year. 1 year forward PAT is 28. You multiply it by P ratio. 828 is the data and 598 crore is the market cap and 38 was upside. Right? So I hope this is very, very clear. Okay. How to know it can be a multi-bagger? वो तो अपसाइड से ही पता लगता है. अगर अपसाइड आपकी बहुत हाई आ गई तो मल्टीबैगर हो सकता है. इसमें 38% आ रही है, पर अगर 40 का पी रेशो मिल गया, अपसाइड 85% हो जाएगी. तो काफी हाई अपसाइड्स है बेसिकली एज पर द मैथ दैट वी आर डूइंग. अपसाइड्स आर फेयरली डिसेंट फॉर द कंपनी. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. नाउ लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल. Okay, one more question. Okay, one more question. Can you do every company using the large order math?
Can you do every company using large order maths? Yes or no? No, right? So a company must share its order book with you to do large order math. If a company's order book is not clear, you will not be able to perfectly estimate the large order math, right? And I'll give you an example. See, this company, ITT Cementation, they got a large order. Okay, इनको एक बड़ा order मिला. Let us look at the large order, right? So this company got a 1700 crore order. But do we know its order book? Yes or no? Do we know the order book? Yes or no? We don't know the order book. Can we apply the large order math? We will not be able to apply the large order math. What can we apply in case of ITT Cementation? We can't apply the large order math. But can we apply the into 4 math? Do you think we can apply the into 4 math? Yes or no? One important thing, you can't apply the into 4 math here because it's a seasonal business. Okay? Can you see that? वैसे सीजनल वैसे कर सकते हो, गारंटी नहीं है क्योंकि ये ड्रॉप इसमें हुआ था ना, तो ये मेरे को बस आई वॉज स्केर्ड, मतलब माय क्वेश्चन इज कि ये ड्रॉप यहाँ पे क्यों आया। तो आइडियली सेल्स तो ड्रॉप नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली तो अप ट्रेंड है इसका, तो करने को कर सकते हो, बट वो ये ड्रॉप है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इस पे करे कि ना करे। करने को किया जा सकता है मेरे हिसाब से, बट सिंस देयर वाज अ मार्जिन ड्रॉप है, मे बी थोड़ा सा रिस्क है बेसिकली, इट्स नॉट अ परफेक्ट अप ट्रेंड बेसिकली, सो स्लाइट रिस्क इज देयर बेसिकली इन केस ऑफ दिस। ठीक है, ऑर्डर बुक मैथ कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट लॉस मेकिंग कंपनी का मार्जिन आप कितना लोगे, आप निकाल ही नहीं पाओगे लॉस मेकिंग कंपनी का मार्जिन। लॉस मेकिंग कंपनी में कोई मैथ नहीं खेला सकता। ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी कुछ कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया सकता, तो भगवान भरोसे चलती है लॉस। ठीक है, so anyway, so I hope that's clear. Let's look at one more example. um, okay, so now we are doing third kind of math called the preferential allotment math. ठीक है, in case of preferential allotment, see finance companies में पीबी करना, मैं तो finance companies में भी पी यूज करता हूँ। I don't use PB anywhere. I just use P ratio. बढ़िया काम करते हैं, P क्यों complicate करे लाइफ, वैसे इतनी complex है, why should we complicate life, right? So I think P ratio works well. I prefer P ratio basically, not PB ratios typically. ठीक है, so this company is raising how much money? Can you read this and tell me how much money is this company raising? $115 is the price, not the money raising. So 158 crore plus your 35 crore. So 158 crore it is raising from to non-promoters, and 35 crore it is raising to promoters. So promoter से कितना raise कर रहे हैं? 35 crore, and non-promoter से कितना raise कर रहे हैं? 158 crore. Right? So what's the total? 158 plus 35, which is 193 crore. ये 25 तो आशीष कचोलिया का इसमें घुसा हुआ है, तो जो 25 है ये आशीष कचोलिया नॉन प्रमोटर के अंदर आ जाते हैं, तो ये सेपरेट नहीं है। सो प्रमोटर इज 158 and non-promoter is 158 and 35 is promoter. So 193 crore is the fundraising happening. Is this clear to everyone? This company is raising 193 crores of funding. Yes or no? It's Balu Forge. Balu Forge. I hope it's clear that this company is raising 193 crores of funding. Okay. So let us look at this math now. Okay. So this company has a revenue of 327 crore. अब एक बार डेटा देख लेते हैं इसका। This company has a revenue of 388 crore and a profit of 48 crore. Can we see 388 crore and 48 crore? Right? So let us go there. 388 crore and 48 crore. What's the PAT margin for this company? 12%.
Is this clear to everyone? Is this clear? 388 crore current revenue on 48 crore PAT margin. So 12% is a PAT margin. What's the P ratio currently? Let us go there. P ratio is 31 roughly. So 31 is the P ratio. All right. Okay. Now one question. This company is raising 193 crore. Why is this company raising money? Why is this company raising 193 crore? For growth. Is that correct? Is this company raising 193 crore for growth? Okay. So this company also told that they're setting up a new manufacturing facility. Okay. Can you see that this company will set up a new manufacturing facility? Yes or no? 15 February. Right? This company will be setting up a new manufacturing facility. This company will be doing some capex to set up the manufacturing facility. Right? So 193 crore will be used for working capital and 193 crore will be used for setting up manufacturing facility. सिंपल भाषा में एक नया प्लांट लगाने वाले हैं. 193 crore से नया प्लांट लगाएंगे. राइट? आई होप दैट इज क्लियर. अभी एक और वो जाते हैं. इस कंपनी के एसेट्स कितने हैं? इस कंपनी के एसेट्स है 48 करोड़. ठीक है. 50 करोड़ के एसेट्स इस कंपनी के. कैन वी सी द बैलेंस शीट? पहली बार बैलेंस शीट खोलिए, एसेट्स देख रहे हैं. 50 करोड़ के फिक्स एसेट है कंपनी के पास. 50 करोड़ के एसेट से 388 करोड़ का रेवेन्यू होता है. ठीक है. 50 करोड़ के एसेट से 388 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, कंपनी कर रही है. 50 करोड़ एसेट्स, 388 करोड़ रेवेन्यू. सो लेट अस राइट दिस डाउन. Company has 50 crore assets and 390 crore revenue और 380 crore revenue. तो एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? रफली आपका 7 के आसपास का एसेट टर्नओवर रेशियो है. तो मतलब फॉर एवरी 1 crore एसेट 7 crore revenue is done. Right? For every 1 crore asset 7 crore revenue is done. Is this line clear? For every 1 crore asset roughly 7 crore revenue is done. Is this line clear to everyone? कंपनी के 50 करोड़ के एसेट है, रेवेन्यू 380 करोड़, asset turnover ratio is 77.6. For every 1 crore asset, 7 crore revenue is there. Right? Now, how much money is the company raising? 193 crore. What percentage money goes into building new asset? अब ये किसी को नहीं पता क्योंकि कंपनी ने बताया. टिपिकली 40-50% जाता है. 40-50% goes into building new asset and remaining goes into something else. वो something else क्या है बाद में बात करेंगे. But 40% money will go into building new asset. तो कितने का फैक्ट्री लगेगी? 40% इंटू आपका 193. 40% ऑफ 193. तो 80 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे रफली. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये 80 करोड़ का मोटा मोटी फैक्ट्री लगाएंगे. हाँ है ना? इज दैट क्लियर? दैट दिस कंपनी विल सेट अप अ फैक्ट्री वर्थ 90 करोड़ रफली. राइट? व्हाट्स द एसेट टर्नओवर रेशियो? 7.6 का है. हम कंजर्वेटिव है, हम 5 ले लेते हैं कि भाई 5 का टर्नओवर रेशियो आएगा. ठीक है. 5 का एसेट टर्नओवर रेशियो ले लेते हैं. Because of the new asset, how much revenue will the company get because of the new asset? Roughly this into this, right? So 380 crores of new asset. Someone is saying company will not be able to run full capacity in first year. You're right. Capacity ramp up रहेगा. थोड़ा टाइम लग सकता है बेसिकली. मतलब मे बी 1 साल बाद नहीं, मे बी 1.5 साल बाद की हम कैपेसिटी एस्टिमेशन हम कर रहे हैं. ठीक है. So 77 crore into 5 is your asset turnover ratio. Roughly 386 crore of new asset. PAT margin कितना है? What's the PAT margin of this company? 12%, right? 12% is the PAT margin. What's the new incremental PAT? कितना PAT आएगा?
this into this. 12% multiplied by your 386 crore incremental revenue. ठीक है. Current PAT कितना है इसका? What's the current PAT of this company or old PAT of this company? 48 crore, right? Old / current PAT. Someone is saying, how do I got asset turnover ratio 5? See, 7 था but मैंने conservative के लिए 5 ले लिया. मतलब 7 था, मैं 7 ले सकता था but मैंने 5 लिया है. तो 5 नहीं है, 7 ही है आप, but I want to be conservative in the math, right? So that is why I'm taking sort of 5. I can take 7 also as per this math, but I want to be conservative basically. ठीक है. So old part is 48 crore. What's the revenue after expansion is completed? 386 plus 380, right? 388 here. What's the PAT after expansion is completed? This plus this. What's the P ratio? 30. Future market cap कितना हो गया? 30 into this. So is this clear to everyone? थोड़ा सा complex है ये. Is this complex? Yes or no? Is this complex? Yes or no? Right. It is slightly complex, not supremely complex, but slightly complex. कोई नहीं, it is fine. With ज्यादा rocket science नहीं है. सिंपल बात करते हैं. 50 करोड़ का एसेट बेस था, उससे 380 करोड़ का रेवेन्यू आता है. तो 7-8 का एसेट टर्नओवर रेशियो है. हम 5 का ले लेते हैं, 5 का मोटा मोटी पकड़ लेते हैं. कंपनी ने 193 करोड़ रेस किया है. 190 का 40% से प्लांट लगाएगी, 80 करोड़ का प्लांट लगेगा. 80 करोड़ का प्लांट लगा, 5 का टर्नओवर रेशियो ले लिया हमने, 380 करोड़ का नया रेवेन्यू आया. फ्रॉम द 380 करोड़ न्यू रेवेन्यू, 12% ऑफ द पैट मार्जिन, 48 करोड़ का नया पैट आया. तो 48 करोड़ का नया पैट है, 48 करोड़ का एग्जिस्टिंग पैट है. तो टोटल पैट आफ्टर एक्सपेंशन इज कंप्लीटेड इज 96 करोड़. पी रेशियो इज 30. 2900 करोड़ का फ्यूचर मार्केट कैप पोस्ट एक्सपेंशन आ गया. ठीक है. अभी हमें निकालना है कि इसका करंट मार्केट कैप कितना है. इसका करंट मार्केट कैप में ना कुछ थोड़े इश्यूज है, वो हम निकालते हैं कि इसका करंट मार्केट कैप कितना है. ठीक है. अभी देखिए, दिस कंपनी, if I look at Screener, right? Let's go to Screener. This company has a market cap of 1500 crores as per Screener. Someone is saying current plant capacity utilization matters. We are not including that, bro. वो अब मुझे नहीं पता करंट प्लांट कितने पे चल रहा है. 100 पे तो होगा नहीं, थोड़ा कम ही होगा. तो हम जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही कर रहे हैं. अगर करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% है तो करंट प्लांट से रेवेन्यू बढ़ता रहेगा. तो ये तो नए प्लांट की हम बात कर रहे हैं, राइट? नया प्लांट में वन थिंग यू कैन से कि भाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. someone is saying why will they expand? Obviously they are expanding because they are close to their current full capacity utilization. नहीं तो करते ही ना expand, right? So why is the borrowing high? उनकी मर्जी, उनको अच्छा लगा, उन्होंने पैसा उठा लिया. मैं भी बोरिंग लेता हूँ, तो उनकी मर्जी हमारी मर्जी. जिसकी मर्जी उसको कर्जा लेने वो लेता रहेगा. अगर कर्जा दे ना पाए तो बात अलग है, कर्जा तो दे पा रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. What's the market cap of this company? What's the market cap of this company? 1500 crores. Can you see 1500 crores? 1523. 1523 crores is the market cap. Okay. This company is raising new shares. Are the new shares listed on the market right now? Are the new shares listed on the market right now? The new shares are not listed on the market. क्योंकि वो अभी जस्ट ऐसे रेस किए हैं, इसलिए उनकी लिस्टिंग नहीं हुई है. So new shares are not listed on the market right now. ठीक है. How many shares is the company raising? This company is raising 1.37 plus 30 lakh. 1.37 plus 30 lakh. So 1.67
lakh shares. Is this clear that this company is raising 1.67 lakh shares? So 1.67 lakh shares are not yet listed in the market. 1.67 crore shares, sorry, 1.67 crore shares. So this company is raising 1.67 crore shares. Okay? Is this clear to everyone? Yes or no? That this company is raising 1.67 crore shares. Can everyone write a yes or a no? Someone is saying no. Okay. Let us read what this company is doing. Let us read what this company is doing. This company is issuing 1.37 crore shares to non-promoters. Non-promoter को 1.37 करोड़ दिए हैं, प्रमोटर को 30 लाख दिए हैं. तो टोटल कितने दिए हैं? 1.37 करोड़ टू नॉन प्रमोटर एंड 0.3 करोड़ टू प्रमोटर. तो 1.37 प्लस 0.3 इट इज 1.67. इसको पढ़ लो बस, ये जो लिखा है ना इसको पढ़ लो. 1.37 करोड़ टू नॉन प्रमोटर and 30 lakh to promoter. 1.37 crore to non-promoter and 30 lakh to promoter. 1.37 crore to non-promoter and 30 lakh to promoter. तो कितना हुआ टोटल? 1.67 करोड़, राइट? 1.67 करोड़ नए शेयर्स इशू हुए हैं. ये नए शेयर्स लिस्ट नहीं हुए हैं मार्केट में. अब ये हमें कैसे पता चला कि नहीं हुए हैं? ठीक है, मैं दिखा देता हूं ये हमें कैसे पता चला कि लिस्ट नहीं हुए हैं. इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं. इस अभी लिस्ट हो गए, एक्चुअली जुलाई में लिस्ट हुए इनका, इसका जो है आई थिंक अभी लिस्टिंग हो गई इनके शेयर्स की. क्योंकि कैन यू सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजिंग? कैन यू सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजिंग ऑफ दिस कंपनी? यस और नो? कैन यू सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजिंग ऑफ दिस कंपनी? यस और नो? राइट. सो अभी लिस्टिंग हो गई है, मतलब अभी इसका जो नए शेयर्स है वो लिस्ट हो गए हैं. नहीं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं होता. पहले कांस्टेंट था, अचानक से चेंज हो गया है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ योर चेंज इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न. इक्विटी देख लेते हैं कितना है. एक मिनट है, थोड़ा सा अब वो देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम तो लिस्टिंग कितने शेयर हैं. और सॉरी मेरे को चेक करना पड़ेगा लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है. आई एम जस्ट चेकिंग. आर्काइव्स 26 जुलाई. क्या टोटल इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इज 9.1 करोड़. एक बार पिछला वो देख लेते हैं. बायोफोर्ज जस्ट चेकिंग क्या लिस्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट फुली श्योर कि क्या लिस्टिंग हुआ है क्योंकि जुलाई का अभी अभी अपडेट हुआ है. सो लेट अस जस्ट चेक शेयर होल्डिंग पैटर्न. आर्काइव्स जून का देख लेते हैं. जून का ठीक है. जून में थे इनके 8.3 लाख 8.3 करोड़ शेयर्स. ठीक है, जून में है 8.3 करोड़ शेयर्स और जुलाई में है 9.7. 8.3 और 9.7 में कितना अंतर हुआ? 1.4. तो मेजोरिटी लिस्ट हो गए हैं बेसिकली. आई थिंक मेजोरिटी लिस्ट हो चुके हैं. पर चेक कर लेते हैं. 54 आपका 80 नंबर ऑफ लॉक्ड इन शेयर्स 3. सी इफ आई लुक एट इट राइट, 9.7 करोड़ यहाँ पे है और 8.3 करोड़ यहाँ पे है. तो 1.4 करोड़ लिस्ट हुए हैं. मोटा मोटी लिस्ट हो गया है पूरा का पूरा. जितना लिस्ट होना था उतना पूरा का पूरा लिस्ट हो गया है. तो अभी शेयर्स इनके बढ़ गए हैं, 9.7 हो गए हैं. ठीक है, 9.7 करोड़ शेयर्स. तो एक बार देख लेते हैं 9.7 करोड़ शेयर्स इनटू आपका स्टॉक प्राइस. ठीक है, तो दिस कंपनी हैज 9.7 करोड़ शेयर्स
एंड योर, ठीक है, एनीवे लिस्टिंग हो गई है तो चेक कर लेते हैं. तो दिस कंपनी हैज योर, ये चेक कर लेते हैं इन्होंने सही भी कैलकुलेट किया कि योर 9.7 crore shares, 9.7 crore shares, current number of shares, and the price is आपका 93. हाँ, तो इसलिए ना मार्केट कैप गलत है बेसिकली. So this company, if you look at it, right, if you look at the data, this company has 9.7 crore shares and the price is 183 per share. So the market cap is 1775 crore. So I think they have not changed the number of shares on screener. So if you look at it, right, what did I do? Someone is saying where is 27 lakhs, which is, someone is saying 1.37 listed or 1.67. तो पूरा listing नहीं हुआ है. ठीक है, अभी मेजोरिटी हो गया ना, मतलब थोड़ा सा अभी रख लेते हैं, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा. तो क्योंकि मैं कैसे समझाऊंगा कि बाकी शेयर्स कहाँ गए. वो थोड़ी सी लिस्टिंग नहीं हुई है, बट अभी अभी के लिए 80% काम हो चुका है, तो मान लेते हैं कि मोटा मोटी पूरा शेयर हो गया है. सो 9.7 करोड़ शेयर्स है. कैन एवरीवन सी 9.7 करोड़ शेयर्स, यस और नो? कैन यू सी 9.7 करोड़ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी? राइट. सी ये इसमें ना शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है. नहीं तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नए शेयर्स इशू है. तो 9.7 करोड़ शेयर्स है. और आपका जो वो है स्टॉक प्राइस है, इफ आई गो टू द दिस राइट, 183 का स्टॉक प्राइस है. तो द मार्केट कैप इज 1775 करोड़, विच इज योर 9.7 मल्टीप्लाइड बाय आपका 183. ठीक है, रफली 1800 करोड़ मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी, मोटा मोटा. ठीक है, बिकॉज द न्यू शेयर्स गॉट लिस्टेड. If you look at the screener market cap, this is off because I don't think they are taking the new shares into consideration. ये गलत डेटा है. It is not right data because they are not taking the new shares which have already been listed on the market. ठीक है. So the current market cap is somewhere around 1800 crores as per this, मोटा मोटा. हमने फ्यूचर का किया था 2800 मोटा मोटा. तो आपका अपसाइड बेसिकली, स्क्रीनर इज टेकिंग 8.3 crore shares, that's correct. अपसाइड is 6, मोटा मोटी 50% के आसपास बेसिकली. अच्छा, someone is saying trend line is updated with current market cap. So let's check trend line. Trend line, Balu Forge. So that's the problem कि कभी कभी ये सब लोग गलतियां कर देते हैं. The current market cap is not 1500 crore. कहाँ है मार्केट कैप इसमें? ये 1775 करोड़ है, देख रहे हो यहाँ पे. सो सी वी कैलकुलेटेड द मार्केट कैप ऑल्सो, मतलब मार्केट कैप ही कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज मतलब वी फाउंड द एरर बेसिकली. क्या एरर था? तो मार्केट कैप इज मोटा मोटी 1800 करोड़ रुपए. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि नए शेयर लिस्ट हो गए. तो और हमें पता कैसे चला नए शेयर लिस्ट हो गए? क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया. ठीक है. तो जस्ट टू शो एवरीवन, this is what happens in a preferential. If I look at Gensol, right? Yeah. Can you see the preferential happening here? Yes or no? This is preferential happening. When preferential happens, the shareholding pattern changes because new shares get added. So therefore, these huge changes in shareholding pattern is typically preferential. क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बेचा है. So is this clear to everyone कि they didn't sell? It is a change in shareholding pattern. Similarly for Balu Forge as well. Balu Forge में भी shareholding pattern ही change हो गया. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथ है, बट ठीक है, थोड़ा समझ लो, याद कर लो अगर समझ में नहीं भी आ रहा है. तो प्रेफरेंशियल में शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. 65 to 56 बेसिकली. एक्चुअली इसमें भी एक एरर है. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली 1.37 करोड़ शेयर लिस्ट हुए हैं, सारे के सारे लिस्ट नहीं हुए हैं. तो इफ आई लुक एट दिस राइट, इफ आई लुक एट, okay, one interesting thing, okay, can you see this 30 lakh not being listed? Number of shares currently outstanding including warrants. तो ये अभी इन्होंने लिस्ट नहीं किया है. 30 लाख इनके बचे हैं. जो इन्होंने प्रमोटर को दिया था ना, वो अभी शेयर नहीं किया इन्होंने.
राइट। सो इसलिए एक्चुअल शेयर तो 9.7 प्लस ये 30 है, तो एक्चुअल शेयर 10 करोड़ है, नॉट 9.7। ये थोड़ा सा मैस है क्योंकि इन्होंने आधा लिस्ट किया है आधा लिस्ट नहीं किया है। तो एक्चुअल शेयर 10 करोड़ है, जब ये भी लिस्ट हो जाएगा तो ये नंबर 10 करोड़ पहुंच जाएगा। ठीक है। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस 30 लाख शेयर ऑल्सो। इनकी लिस्टिंग होनी बाकी है अभी, ये इनकी लिस्टिंग अभी होएगी थोड़े टाइम में। तो इज दिस क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ये 30 लाख ये है, मतलब ये तो 30 लाख आपको दिख रहा है ना। दिस इज बेसिकली दिस, इफ आई टेल यू कि क्या है, कैन यू सी दिस 30 लाख? दिस इज व्हाट हैज नॉट बीन लिस्टेड, दिस गॉट लिस्टेड, दिस वाज नॉट लिस्टेड। इसलिए पूरा मैथ का मेस हुआ है पूरा, क्योंकि अगर आप डेल्टा चेक करेंगे तो 1.37 का ही डेल्टा है, राइट, जो हमने पूरा कैलकुलेट भी किया था। तो दिस 1.37 गॉट लिस्टेड, दिस 30 लाख इज स्टिल नॉट लिस्टेड। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली। तो अगर हम टोटल कर दें तो 10 करोड़ शेयर है इस कंपनी के, 10 करोड़ रफली, और इसका मार्केट कैप कुछ 1830 करोड़ है। ठीक है। तो एनीवे ये इसका करंट मार्केट कैप है, ये इसका फ्यूचर मार्केट कैप है पोस्ट एक्सपेंशन। 60% अपसाइड है वंस सी एक्सपेंशन इज कंप्लीटेड। ठीक है। ये सब करने कराने में अभी लगेगा 1 साल 1.5 साल, क्योंकि कैपेसिटी लगेगी। वी शुड कंसिडर 10 करोड़ शेयर्स, राइट, दैट्स करेक्ट, वी शुड कंसिडर 10 करोड़ शेयर्स, दैट्स करेक्ट। ठीक है श्रीराम, 9.7 प्लस 30 लाख। So this is the basically upside post capacity expansion is completed. 60% upside basically. ठीक है। तो प्लीज टू टॉप, ओके। एक बार थोड़ा पढ़ लो। आई थिंक थोड़ा सा ये इन्होंने आधा लिस्टिंग कर दिया ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने। लास्ट टाइम तक तो लिस्टिंग नहीं किया था तो मैं आसानी से समझा पाता था। आज इन्होंने लिस्टिंग कर दिया तो मेरे को भी दिखा कि यार ये तो लिस्टिंग हो गया है, तो इससे थोड़ा पैटर्न पैटर्न चेंज हो गया इनका। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? कैन दिस बी डन इन ऐप एज वेल? ऐप में कर देंगे इन सम टाइम, ऐप में कर देते हैं इसको। ठीक है। कैन एवरीवन से यस और नो इफ दिस इज क्लियर? कैन अदर्स से यस और नो? 4 people have said. आई एम होपिंग बाकियों को भी क्लियर हुआ ही होगा। इफ नॉट प्लीज से यस और नो। सो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी होता है प्रेफरेंशियल बेसिकली। या थोड़ा सा एप्लीकेशन करना पड़ेगा और हो जाएगा। और प्लस इसमें तो मैथ्स भी है कि 30 लाख लिस्ट नहीं किया है, 1.37 किया है, तो थोड़ा समझने में थोड़ा एफर्ट इसलिए जा रहा है बेसिकली कि क्या हुआ है। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसका सेल्फ हेल्प में भी डाल लेते हैं, सेल्फ हेल्प में डाल लेते हैं। तो अगर हम सेल्फ हेल्प में डालते हैं, लिस्ट करने से प्राइस कम होना चाहिए ना? नहीं, लिस्ट करने से प्राइस कम नहीं होता, लिस्टिंग सेम प्राइस पे होती है। ये बोनस नहीं है ना, ये तो नए शेयर है, तो उनको नए शेयर उसी प्राइस पे मिले, मतलब शेयर का एक ही प्राइस होता है ना। ये बोनस शेयर नहीं मिले किसी को, इससे प्राइस कम नहीं होता, ये प्रेफरेंशियल है। बोनस शेयर में प्राइस कम होता है। ओके। सो एनीवे, एनीवे वन थिंग, सो लेट मी डू दिस यूजिंग द सेल्फ हेल्प टूल। ओके, सेल्फ हेल्प टूल से भी कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल सर्च कंपनी बालू फोर्ज। See, this market cap is the pre preferential market cap. So 1500 करोड़ है, शेयर प्राइस है आपका 180, सेल्स है 388, प्राइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 48, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है 5, दिस इज 1.67, दिस इज 115, दिस इज 40, दिस इज 30. So I just quickly filled in the data for this company in our tool also. Company is Balu Forge. Current market cap, this is before preferential happened. Okay, this is before preferential happened. That is 1500 crores. Okay. Share price is 180. TTM sales is 388. Net profit is 48 crores. Fixed asset turnover is 5. 1.67 crores new shares getting listed. Preferential price is 115. 40% into going generating asset and 30 ka P ratio. Calculate and you will get the same number here also. Okay. So if I look at it right, 192 crore is the money raised. 77 crore going for new asset.
384 crore is the revenue that will be generated from increase in asset. 388 crore is the old revenue. 772 crore is the new revenue. Expected 1 year forward profit is 95 crore. Expected 1 year forward market cap is 2865 crore. This is the current market cap, 1500 crore. This is the preferential market cap which got listed right now. जो हमने change देखा ना, ये पिछले हफ्ते तक change हुआ नहीं था. So this is the hidden market cap which was not listed till last week. तो ये जो 1.67 करोड़ शेयर्स थे, ये लास्ट वीक तक लिस्टेड नहीं थे, अभी लिस्ट हो गए हैं. तो इसलिए मैंने पिछला मार्केट कैप लिया जो स्क्रीनर का मार्केट कैप है, और मैंने उसमें 1.67 करोड़ के शेयर्स को ऐड कर दिया है मार्केट कैप को. इसलिए करंट एक्चुअल मार्केट कैप इज 1800 करोड़ एंड अपसाइड कम्स आउट टू बी 60%. ठीक है. सो इज द सेल्फ हेल्प टूल क्लियर एज वेल? इज द सेल्फ हेल्प टूल क्लियर? ये थोड़ा रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा मुश्किल है बट आई थिंक हो जाएगा. काइंडली रिपीट. ओके ओके. सो बेसिकली ना, लेट मी जस्ट टेल यू दिस थोड़ा सा धीरे धीरे दोबारा. लेट मी जस्ट टेल यू थोड़ा सा धीरे धीरे सेम चीज. 1 second. This company has a market cap of 1500 crore. Okay. This company has a market cap of 1500 crores. Plus, it has some new shares to be listed. 1500 crores is the current market cap. Plus these shares, right? This 1.37 plus 30 lakh or 1.67 crores are yet to be listed. So the current market cap of this company is 1500 plus 1.67 multiplied by the current market price. So that is the hidden market cap wala thing which is there basically. So 1500 is the current market cap. Hidden market cap is your preferential shares multiplied by the current share price, which is 180. So that is how you derive the 1800 crores of market cap. अभी इसका लिस्टिंग हो गया है तो हमने अलग तरीके से भी सेम आंसर दिया. एनीवे आप इसको देख लेना, दोबारा देख लेना आफ्टर द वो, मतलब इट इज लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उन्होंने आधी लिस्टिंग कर दी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेसिकली. So anyway I hope this is done right. So let me move ahead basically. Okay, let me take one last example of this one. Okay, so let us take this hypothetical example. A company has a market cap of 440 crore. The PAT is 11 crore. The revenue is 59 crore. PAT percentage is 11 upon 59, which is 19%. And the P ratio is 40, basically. Right? Assume that this is given to you. Now, let's say the company is expanding capacity by 40%. Okay? This company in the above example is expanding capacity by 40%. So what will be the new revenue of this company? What's the new revenue of this company? 59 crore is the current revenue. And the revenue post expansion will be 59 into your 1 plus this number, right? So 59 into basically 59 multiplied by 1 plus 40%, right? So this is the new revenue post capacity expansion. What's the PAT percentage of this company? What's the PAT percentage of this company? 19%. What's the PAT post expansion? This multiplied by this. What's the P post expansion of this hypothetical company? Current P ले लो, 40 का ले लेते हैं. Market cap post expansion is 40 into 16, basically 627 crores आ गया, and upside आपकी 43% आ गई. तो ये capacity expansion में simple रहता है. How did you get 82? 82 is 59 multiplied by 1 plus 40%.
कैपेसिटी 40% से बढ़ रही है, राइट? तो अभी 59 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 40% से बढ़ गया. इज दैट क्लियर विकास भाई? 59 करोड़ इज द करंट रेवेन्यू, इट इंक्रीज बाय 40%. ठीक है. 83 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट एक्सपेंशन आ गया. 19% का पैट मार्जिन था. पैट पोस्ट एक्सपेंशन 16 करोड़ का आ गया. 40 का पी दे दो जो कि करंट पी के बराबर है. 628 करोड़ का मार्केट कैप आ गया. एंड अपसाइड इज 43%. तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन में होता है. व्हाट्स फॉर्मूला फॉर मार्केट कैप एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड मार्केट कैप इज पी इनटू योर 1 ईयर फॉरवर्ड प्रॉफिट. ठीक है. तो पी इंटू 1 ईयर फॉरवर्ड प्रॉफिट, दिस इज द कैपेसिटी एक्सपेंशन का फॉर्मूला. तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन की मैथ होती है. चारों मैथ में हम सेम ही चीज कर रहे हैं. कैलकुलेट 1 ईयर फॉरवर्ड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो विच यू फाइंड फेयर, गेट 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप, divide 1 year forward market cap by current market cap, and multiply current price is the upside. ठीक है. So I hope the algorithm is clear for everyone. So you are presuming 100% utilization on expanded capacity. That is correct. Typically वो expand कर रहे हैं तो utilization तो अच्छी लेकर जाएगा ही जाएगा. ठीक है. Is the algorithm correct? Is the algorithm clear for everyone? मतलब हमने पूरा क्लास में एक ही algorithm सीखा है. Calculate 1 year forward PAT, multiply by P ratio which you find fair, get 1 year forward market cap, divide by this and this. Right? ओके. एक दो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. ओके. सो एक दो रफ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेसिकली. लेट्स से आल्सो व्हाट इज द सोर्स इंटरनल पता नहीं. एनीवे आई थिंक अभी नहीं, फॉर नाउ दिस इज, मतलब आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड. लेट्स मूव अहेड. वैसे भी टाइम कम है थोड़ा. सो लेट अस मूव अहेड बेसिकली. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? हाउ टू एस्टिमेट 1 ईयर फॉरवर्ड प्रॉफिट. अभी पीपल आर सेइंग ना कि प्राइस टन है नहीं है. अभी हम निकाल सकते हैं क्या प्राइस टन है क्या नहीं है. इज दैट क्लियर कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस है क्या नहीं है? आपको 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस निकालना है आफ्टर द एक्सपेंशन इज कंप्लीटेड. अगर उसके बराबर पहुंच गया प्राइस तो प्राइस टेन है, नहीं तो नहीं है. ठीक है. इज द प्राइसिंग इन थिंग क्लियर फॉर एवरीवन? या या. तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. आई एम गेटिंग अ yeah, so I think please do look at the recording for this one. So one more thing which I will teach today. The recording is already available. Just 1 second. So you can see the recordings here, okay? Sovereign education. Just see all recordings here. ये थोड़ा पुराना वाला है. पुराना सेशन है. इसके रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी पड़े हैं. मतलब सिमिलर सा एग्जांपल रहेगा, बट रिकॉर्डिंग्स आर ऑलरेडी देयर. सो कैन यू सी द रिकॉर्डिंग हियर ऑन दिस वन? मतलब सेम ही सी. मैंने एग्जांपल अलग लिया होगा बिकॉज आई कीप ऑन चेंजिंग एग्जांपल्स, बट एक एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है. ठीक है. तो यू कैन वॉच दिस रिकॉर्डिंग एज वेल. कैन यू सी द रिकॉर्डिंग वाला साइट? सो एजुकेशन सेक्शन में पड़ा हुआ है. ठीक है. मोस्ट लाइकली शायद मैं इसको भी डाल ही दूंगा इस वाले को, या गूगल पे डाल या यूट्यूब पे डाल दूंगा या फिर यहाँ पे डाल दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख लेना, रिकॉर्डिंग समझ आ जाएगा कि बेसिकली कैसे करना है मैथ बेसिकली. ठीक है. एनीवे, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस लुक एट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. ओके. Is it okay to take current company P while calculating on self-help tool? Either take current P or take the fair range. दोनों में से जो लोअर हो. ठीक है. दोनों में से जो लोअर हो वो ले लेना. So I hope that's clear. Anyway, so let's look at the next one क्योंकि टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं. One more interesting thing. Okay. Uh,
So there's something called float. Okay, float को पढ़ लेते हैं. What is float? So you go to shareholding pattern of a company, shareholding pattern, and you click here, which is this, and you look at your shareholding pattern here. Okay, click on public shareholder basically here, and this page opens up. This page is the shareholding pattern of a company, detailed shareholding pattern of a company. This line here is called the retail float. This, ये जो लिखा है resident individuals holding nominal share capital up to 2 lakh. इसका एक simple word होता है, which is retail investors. So this company has 273 retail investors, and your those 273 retail investors hold 6.34% of the company. Can you read this line? 273 retail investors hold 6% of the company. ये clear है सबको? Is this clear to everyone? That 273 investors hold 6% of the company. Okay. The lower the 6% का number, the better it is for the company. क्योंकि उतना स्पीड से प्राइस ऊपर जाएगा. ठीक है. The lower the 6% का number, the better it is for the company, because उतना स्पीड से प्राइस ऊपर जाता है. A good low float company moves up very fast. So always remember, the lower this number, the better it is. If this number is less than 5%, that's a very low number. It's a super low float company. And this is also called the retail float. Float बोलते हैं, FLOAT. ठीक है. Float, it's called float. The lower float of a company, the faster it is, it goes up fast. The higher the float, the slower it goes up fast. ठीक है. How to check this in NSE? Let's check this in NSE as well. Let's check for this company, Giriraj Civil. How to open this in NSE? You go to sort of your corporate disclosure, shareholding pattern, and you click here, view all, and you click here, this one, and you click here, public shareholder. Okay. So how many retail investors have this company? How many retail investors have this company in India? How many retailers have this company in India? Only 54 retailers, right? Only 54 retail investors have this company in India. Is it large or small? Is 54 a large number or a small number? In a country of 150 crore people or 140 crore people, only 50 people own this company. Large or small? It's a very small number, right? Very few people actually have this company. Therefore, such companies go fast if they are good companies. Okay? It is a very low float company. Very low float. Okay? So, the lower the float, the faster it goes up. Okay? It is advantageous to buy low float companies if all else being equal. How to find float in NSE website? I'll just show it to you again. Go to your company page here on NSE. On company page, click on corporate disclosures. On corporate disclosures, click on shareholding pattern. In shareholding pattern, click on view all. In view all, click on this one, Giriraj Civil. And in Giriraj Civil, you click on your public shareholder, basically. Okay? So this is how you basically reach this page, that 54 people are owning this company. So all else being equal, अगर आपको कभी tie break करना है, तो always use float as a criteria. I prefer to buy low float companies. Okay, मुझे अच्छा लगता है कि company का float कम होना चाहिए. To give another example, let's take another example of a company. You can see my screen, right? Showing your Pulse Electronics. You can see my screen, Pulse Electronics on the screen.
I think most people can see sign. I don't know why your screen is not showing. So corporate disclosures again, shareholding pattern, your arc view all, your this one, your then this one. Okay. How many people in India have this company? How many people in India have this company? 99. Out of these 99, 10 are my friends. Me and my friends are amongst these 99. तो हमारे अलावा 89 लोग के पास है कंपनी in this country of 140 crore people. ठीक है. So obviously this is a power of float that if a company is decent, a low float company is better than a non-low float company, provided all else is there. ठीक है. So an important factor is that this one. Float is the least important criteria. Okay, float is the least important criteria. The most important ones are these. After this, float is the sixth important criteria. ठीक है. Don't buy a company which does not have a profit uptrend but has a low float. वो एक बुरी company है. But if all this is equal, if all parameters are being checked, you can go for a low float company than a high float company. ठीक है. Is that clear to everyone that float is the least important criteria? Can you say that float is the least important criteria? Can you just like write it down in the chat window? Float is the least important criteria. Can we write down in the chat window? Can we write this down in the chat window? Float is the least important criteria because these six have to be true. अगर ये six true नहीं है ना तो फिर ये five true नहीं है तो कुछ नहीं होगा. Float is the least important criteria. But if you have to break a tie as a tiebreaker, float is a good criteria. अगर दोनों में वैल्यूएशन अच्छा है, प्रॉफिट अपट्रेंड है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, एचएनआई बाइंग है, सेक्टर भी बढ़िया है, then float is a tiebreaker criteria. I use float as a tiebreaker criteria. ठीक है. So float is a very good tiebreaker criteria. I hope this is clear. ठीक है. Float is a tiebreaker criteria. ठीक है. So uh, one more example. I think last thing which I will share in the session. Okay. There's something called a bar of glory. Okay, bar of glory, and I'll show it to you. What is a bar of glory? See this company. Can you see this big bar? This big huge bar of glory. Big huge bar. Can everyone see the big huge bar here? So someone purchased a very big percentage of the company on this day. On 1st December 2022, someone purchased a very big chunk of the company. Why did this person buy such a big chunk of the company? Why do you think this person bought such a big chunk of the company? And was he a big guy or a small guy? जिसने इतनी ज्यादा कंपनी खरीद ली. He was supremely bullish on the company, right? इसलिए उसने इतना सारा कंपनी खरीदा है. अदरवाइज वो क्यों खरीदता? He is a big buyer, right? He's a big smart buyer most likely. तो ये जो बड़े बायर्स होते हैं ना ये बड़े बार्स बनाते हैं. And can you see the bar? It has a 100% delivery percentage. It's a huge bar with a 100% delivery percentage or a very high delivery percentage. And look what happened to the stock after this. सीधा 70 रुपए से 1000 रुपए. फिर बार जब बनते हैं ना इसके बाद बड़ा पैसा बनता है. एंड आई कॉल दिस बार ऑफ ग्लोरी कि उसके बाद स्टॉक प्राइस भागता रहता है. एंड आई शो यू अनदर बार. ओके, लेट्स लुक एट दिस बार. कैन यू सी द बार हेयर ऑल्सो? अ बिग बार हेयर. ये बिग बार है यहाँ पे एकदम से काफी बड़ा बार बना हुआ है. ठीक है, इसमें डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी कम है बट ये भी एक बहुत ही बड़ा बार बना हुआ है. समवन परचेज अ बिग चंक ऑफ दिस कंपनी हेयर ऑल्सो. maybe not the best example. Maybe the best example is Nintech. Nintech. कौन सा एग्जांपल नहीं? स्पेक्ट्रम इसमें का 12 दूर यार भूल गया. हाँ इसमें देख लेते हैं. सॉरी माय बैड.
Uh, I think I'm forgetting stuff today. You can see a some big bars here, right? यहाँ पे काफी सारे big bars हैं. इस कंपनी में भी सेम ही चीज हुआ था. Like if I look at the chart here, right? यहाँ पे कुछ बड़े बार बने थे, फिर ये भाग गया था स्टॉक. Can you see this big bar here? 27 रुपीज पे बिग बार बना था 92% का, तो ये स्टॉक भाग गया था. There was a big buyer who actually came here. Can you see this big bar as well? High delivery 92% and at a price of 27 rupees. Can everyone see the big bar? Yes or no? So big bars होते हैं ना, this means that someone is a very smart buyer and someone purchase a big chunk of the company. Probability high हो जाती है कि अब ये स्टॉक भागेगा. ठीक है. I'll show you a recent bar of glory as well. अभी चेक करेंगे कि भागेगा कि नहीं. What percentage we have to look for? Preferably more than 80%. More than 80% is the bar of glory. ठीक है. It should be more than 80%. ठीक है. Big sell also come. Not really true. उससे पब्लिक से खरीदा है. टिपिकली वो पब्लिक से खरीदता है या फिर वो बाकी एचएनआई से खरीदता है. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. व्हाट आर द रीजन फॉर सेलिंग एंड व्हाट इज द रीजन फॉर बाइंग? देयर इज ओनली वन रीजन फॉर बाइंग कि प्राइस विल गो अप. देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर सेलिंग, also known as profit booking also. Profit booking is also a reason for selling. ठीक है. I'll show another example. Okay, this one. Let's see this one. Can you see this big bar here? This big bar here, 86% big bar on 8th March. Yes or no? We report all these bulk deals. ठीक है. If HNI is selling and HNI is buying, so mostly the HNI who is buying, that is the right HNI. जो HNI is selling वो profit booking कर रहा है. ठीक है. So can you see this big bar here? We reported this big bar also. ठीक है. So can you see this big bar here also? This was another big bar. So you can see big bar is the same as bulk buying. That's correct. It's a huge buying basically, huge buying. ठीक है. So these big bars typically lead to price increase because the buyer knows कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है. Where do you report big bars? We report in bulk deals only. Up, not every bulk deal is a bar of glory, but some bulk deals are bar of glory. हमने स्पेशली बिग बार्स रिपोर्ट करना चालू नहीं किया. ठीक है. बट आई होप यू कैन सी द पावर ऑफ दिस बिग बार्स. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की इनमें डिलीवरी परसेंटेज हाई होना चाहिए. अगर डिलीवरी परसेंटेज लो है ना तो बार ऑफ सेलिंग है. अगर डिलीवरी परसेंटेज हाई है तो बार ऑफ बाइंग है. डिलीवरी परसेंटेज लो है तो बार ऑफ सेलिंग है. एंड इट हैज टू बी ह्यूज वॉल्यूम बार. बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए. आई विल शो यू अनदर एग्जांपल. ये रिसेंट है. ठीक है. कैन यू सी दिस बिग बार? 93% बिग बार ऑफ 2 लाख शेयर्स. सो रिसेंट बिग बार है. अब ये भी हुआ है. मैंने भी खरीदा है. देखते कैसे परफॉर्म करता है. आई डोंट नो. So let's see how this company performs. This company is also doing preferential, by the way. Can you see this big bar here? It's a huge bar of 93% delivery. So big bars are काफी helpful होते हैं. इससे काफी कुछ पता लगता है कि भाई HNI बाइंग कर रहे हैं बेसिक. Can you repeat the delivery percentage logic? Okay. अगर आप एक बड़े बायर हो और आप पूरा स्टॉक घर पे लेकर जा रहे हो अपने, तो उस दिन डिलीवरी परसेंटेज हाई रहती है. अगर आप माल चिपकाते हो किसी को, इफ यू आर सेलिंग टू रिटेल, डिलीवरी परसेंटेज इज टिपिकली लो. तो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. इफ यू सी दिस कंपनी, दिस इज अ बिग बार, बट दिस इज अ बिग बार ऑफ सेलिंग. कैन यू सी? डिलीवरी परसेंटेज इज ओनली 44%. सो दिस इज अ बार ऑफ सेलिंग. कैन यू सी 44% and see what happened to the stock after it? So this is a bar of selling. This is a bar of buying because it has 92% delivery. Can you see two large bars but very different from each other? Both are big bars. One is bar of selling and one is bar of buying. नहीं, ग्रेटर देन 50% नहीं, 80% के ऊपर होता है अच्छा बार. ठीक है. सो बार ऑफ सेलिंग में 40-50% का डिलीवरी रहेगा. यू कैन सी 44%. और बार ऑफ बाइंग में 80% से ऊपर का डिलीवरी रहेगा. तो ये बार ऑफ सेलिंग था एंड ये बार ऑफ बाइंग था. ठीक है. सो अगेन वन क्वेश्चन. अगर बार ऑफ ग्लोरी बना है तो क्या पक्का ऊपर जाएगा? गारंटी है? गारंटी नहीं है. किसी चीज की गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट. प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है.
ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है कि प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो रही है और सक्सेस 100% वो कभी नहीं पहुंचेगी। तो दिस इज अक्यूमुलेशन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये अक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है। So I hope bar of glory is clear. A big bar with heavy volumes and high delivery is typically a good thing. A big bar with low delivery percentage is not a good thing. ठीक है। So I hope this is clear as well. Anyway, I think please write the complete word. Complete word क्या? Bar of glory, bar of glory. मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। या ये, या so someone is saying Gensol promoter holding dropped in December 22. It was preferential. Profit uptrend plus bar of glory is a good combination. That's correct. ठीक है। So I hope this is interesting for you. One more thing which I will show you is something which I see also. I'll just show it to you. See, if I see this kind of a behavior, can you say that Abhishek Shelakram Thorat is bullish on this company? Can you say that Abhishek Shelakram Thorat is bullish on this company? Yes or no? Because he purchased this company in March quarter, right? When a guy suddenly appears in the shareholding pattern, it means that the guy is bullish on the company, right? So this is also a good thing. This is also accumulation. ये बार में नहीं दिखती है, बट स्लो accumulation थी. If a guy's name suddenly shows up in वो, it is accumulation. धीरे धीरे आप देखेंगे मेरा नाम भी कभी कभी शो अप कर जाता है. If you look at here, you will see my name also suddenly showing up here in this company, right? Aditya Joshi, I also suddenly showed up in this company. So whenever this happens, typically the person is actually bullish on that company. That is why this sudden change in shareholding pattern happens. ठीक है. So anyway, I just thought कि ये accumulation distribution थोड़ा बता दूं कि how to look at big bars and how to look at HNI entries in companies, because that's a good source of information as well. ठीक है. I'll show you another example. If you can see, you will see another HNI showing up here. This company showing up here. Basically, Velray Solar. ये सडनली यहाँ पे घुस के आ गई थी. तो ये हमेशा अच्छी चीज होती है जब ये एकदम से घुस जाता है ना, कोई अंदर आ जाता है अचानक से. इट्स अ गुड थिंग बिकॉज वो बुलिश है बेसिकली, तभी वो अंदर आया है. हमेशा नहीं होता बट 90% होता है, स्पेशली अगर प्रॉफिट अपट्रेंड है तो. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस एंड बार ऑफ ग्लोरी एंड एवरीथिंग. So anyway, I think I'm done here. How to read this? It's a good sign basically. If someone shows up in the शेयर होल्डिंग pattern, it's a good sign. If it's a profit uptrend company. ठीक है. So anyway, I hope. Uh, Sorry, which company were you bullish? अरे छोड़ो, मेरा कंपनी छोड़ो, वो ठीक है, आप देख लेना वो. आप नाम गूगल कर लेना, दिख जाएगा आपको. एनीवे मतलब doesn't matter basically. So let me go to the most important slide of the session. वो फिलिक्स था, फिलिक्स था. मेरा जो कंपनी है फिलिक्स था, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था. तो मैं एक साल पहले बुलिश था. अभी तो मेरे को भी देखना है क्या करेगी वो. एक साल पहले मैं बुलिश था, तभी खरीदी थी, प्रॉफिट में भी हूँ मैं बैठा हुआ. बट नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, तो चेक कर लेना. मतलब इट्स नॉट अ, आई एम ऑल्सो माई सेल्फ नॉट वेरी श्योर. ठीक है. Anyway. So I think this is the most important slide of the session. I want profit uptrend. ठीक है. So can we write this line and then we'll end the session? Can we write this line in the chat window? I want profit uptrend. 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 ठीक है. So I hope this is clear to everyone. So I think we'll end the session here.
And so I think let's end the session here.